قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه
وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الصادق الأمين. صلوات. اللهم صل على محمد.
पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। सलामी कहते थे जालिम रुलाओ ज़ैनब को, सलामी कहते थे जालिम रुलाओ ज़ैनब को, कि ज़िबह शह को करो और दिखाओ ज़ैनब को। उठा है रात को ताबूत उसकी अम्मा का, उठा है रात को ताबूत उसकी अम्मा का, जहाँ में दिन को खुले सर फिराओ ज़ैनब को। न जिसने देखी हो बेपर्दगी ये खैरुन्निसा, तुम उसको बाहर उरियाँ दिखाओ ज़ैनब को। अगरचे फुरक़ते अकबर से उसको गशु आए, अगरचे फुरक़ते अकबर से उसको गशु आए, लहू भरा हुआ नेज़ा सुंघाओ ज़ैनब को। न मुस्तफ़ा है न हैदर न है हसन हुसैन, करो न खौफ किसी का सताओ ज़ैनब को। इमाम खुल्द में मुश्किल कुशा से कहते थे कि कैद जुल्म से बाबा छुड़ाओ ज़ैनब को। उठा के हाथों को बलवे में कहती थी कुलसूम, हुसैन भाई कहाँ हो छिपाओ ज़ैनब को। पुकारती थी ये लाशे हुसैन मक़तल में कि ज़ालिमों ना मुसीबत दिखाओ ज़ैनब को। अगर मुझे नहीं देते हो तुम कफन तो न दो, ये कोई कोना सी चादर उड़ाओ ज़ैनब को। लाई ये कहते थे पुरसा न दो कोई इसको, अगर गिरे अगर न ज़मीं से उठाओ ज़ैनब को। फुरात से ये लाइनों को आती थी आवाज़, इधर से शाम को लेकर न जाओ ज़ैनब को। दबीर हक से कहूँगा दमे सवालो जवाब, करेंगी मेरी शफाअत बुलाओ ज़ैनब को। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत।
लगा दें, तुम लगाओगे अपने से, लगा दें, तुम लगाओगे, इसको इस पे नहीं, इसको इस पे। सलावत। या मुर्कुशाली मुझे दुनिया का गम ना हो, लेकिन गमे हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। या मुर्कुशाली मुझे दुनिया का गम ना हो, लेकिन गमे हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। खुशियों से दूर होकर जीता रहूँगा मौला, इस गम से दूर होकर जी ना सकूँगा मौला। कोई खुशी नसीब में चाहे रकम ना हो, लेकिन गमे हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। वो दिन भी जल्द आएगा जहाँ के साहिब रोता हुआ न जब से करबो बला की जाने। इतना चलूं के बस मेरी सांसों में गम ना हो, लेकिन गमे हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। या मुर्तज़ा अली मुझे दुनिया का गम ना हो, लेकिन गमे हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। मुश्किल कुशा तुम्हीं को मैं मांगता हूँ मौला, सब पर करम किया है ये जानता हूँ मौला। बेशक मेरी गयात में कोई करम ना हो, लेकिन गमे हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। या मुर्तज़ा अली मुझे दुनिया का गम ना हो, लेकिन गमे हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। शाबीर के ही गम से मिलकी गगे को राहत कब मांगता हूँ मौला दुनिया की बादशाहत। बेशक मेरी नसीब में जाहो खशम ना हो, लेकिन गमे हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। शागे जवान लाशा देके कमे उठाऊं, यागे हुसैन लेकर मैयत पे उसकी जाऊं। चलने की काब खत्म हो उठा कदम ना हो, लेकिन गमे हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। या मुर्तज़ा अली मुझे दुनिया का गम ना हो, लेकिन गमे हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। शाबीर के लिए ही मांगा था मैंने गाजी, उम्मुल बनी के लब पर बस एक ये दुआ थी। जब तक जीऊँ मुझे मेरे गाजी का गम ना हो, लेकिन गमे हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। या मुर्तज़ा अली मुझे दुनिया का गम ना हो, लेकिन गमे हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। रेगान आज़मी कहने लगे रजा से, रो रो के आज मैंने मांगा है मुर्तज़ा से। दुनिया में मेरे नाम का चाहे भरम ना हो, लेकिन गमे हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। या मुर्तज़ा अली मुझे दुनिया का गम ना हो, लेकिन गमे हुसैन मेरे दिल से कम ना हो।
सलावत। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। फर्द आमाल में बस अश्क हमारे होंगे, हश्र के दिन यही बख्शिश के सहारे होंगे। कब्र में चैन से सोएंगे अज़ादार हुसैन, आँख खोलेंगे तो कौसर के किनारे होंगे। काफिला खुल्द की जानिब जो बढ़ेगा अपना, राह बर हज़रत अब्बास हमारे होंगे। अहले मातम को भला रुक सकेगा कोई, बाबे जन्नत पे जो ज़हरा के दुलारे होंगे। किन तमन्नाओं से 18 बरस ज़ैनब ने कितने सदक़े रुक़े अकबर के उतारे होंगे। दिल क्या क्या हाल हुआ होगा अली अकबर जब लेके मरने की रज़ा रन को सितारे होंगे। रो लो आज हाथों से सर पीट के असग़र को रबा, कल को रस्सी में बंधे हाथ तुम्हारे होंगे। फर्द आमाल में बस अश्क हमारे होंगे, हश्र के दिन यही बख्शिश के सहारे होंगे। सलवात। Assalamu alaikum to everybody. Alhamdulillah, we are here this year to commemorate the Shahadat, the greatest Shahadat in the history of mankind. Today is the 1st of Muharram. We have different institutions in the tri-state area went through difficulties trying to secure a speaker. Our Urdu speaker, Maulana Abul Qasim, who was coming from Australia, he arrived yesterday morning at 9 a.m. at JFK airport.
They held him from 9 a.m. till 10 p.m. yesterday at the airport. They even confiscated his telephone. And then at 11 p.m. they told him to go back to Australia. So he had to take a flight last night back to Australia. But we were very, very fortunate that we have with us Sheikh Abu Sumayya from Toronto. He is really a gift to the the sect of Shia Islam, mashallah. He really comes from a religious family, but from a religious Brahmin family. And he was attracted towards Islam after 9/11. And so he was a student at University of Toronto. It's a very prestigious university. It's not easy to get admission into that. He was doing economics, then he switched to Middle Eastern studies, and then he was attracted to the Mazhab of Ahlul Bayt, and we are very fortunate to have him here with us. But before I welcome him to the Mimbar, I would like you to please recite a Surah Fatiha for the sponsors of tonight's program. It's Mr. and Mrs. Javed Sadiq and Mr. and Mrs. Aziz Sadiq. Please recite a Surah Fatiha for the marhumeens of their family. Bismillah Salawat. Also, please recite a Surah Fatiha for Akbari Fatima Shabir, daughter of Mir Wajid Hussain Khan. She passed away today in Kansas City. She was the mother-in-law of Inayat Bhai's daughter, Behnaz. So please recite a Surah Fatiha for her. Bismillah. Salawat. I want to remind you once again, I did mention it earlier, but I'm going to keep repeating this throughout, so please be here on time. Our program will start at 7 p.m. We want to have the English speech, inshallah, and then you'll really cherish the English speech. By the way, the Urdu speaker afterwards will be Maulana Ali Haidar Abidi, who you all know very well. He's from the area. He'll be here to recite a few minutes of Masaib, inshallah, Majlis, after namaz, inshallah. So with that, let's please welcome Sheikh Abu Sumayya to the member with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Once again, a loud salawat, please. Allah. أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الغوي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وأفضل الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وأبو القاسم المصطفى محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الميامين المهديين المعصومين المقتولين المظلومين المعصومين ولا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء ولعنة الله دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. And then the ayah continues. Allah subhanahu wa ta'ala
reminds us in the Quran, in this ayah from Surah Al-A'raf, that they ask the Prophet about the hour, about the impending hour, the coming hour, the sa'ah. He tells them that that knowledge is with Allah subhanahu wa ta'ala. But it is of such a day, ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. You know, that all of existence, when Allah says samawati wal ard, that everything is weighed down in the expectation and the coming of the hour. That hour that shall come, baghdatan, without us realizing. Let us sit and pause and think about to ourselves as we see the hilal of Muharram, that are we prepared for that hour? Are we prepared for that moment? Baghdatan, Allah says it will come immediately soon. The sa'a, as-sa'a, as-sa'a, as-sa'a. Are we prepared? In my 20 years of studying Islam, I may look young, but I'm not that young. I've been in Islamic studies for 20 years, across different continents. And now I'm a professor of Islamic studies and have a doctorate in religious studies and Arabic literature, in addition to spending many, many years between the East and the West over the past 2 decades. Why do I mention that? For one reason and one reason only. After all of those years in looking at the Quran, I come to one conclusion, among many, but one very profound conclusion. As-sa'a, as-sa'a, as-sa'a. The hour is near. And we are called upon to pay heed to the sa'ah. It is from the beginning to its end. Maliki yawmiddin, isn't it? We're reminded, biyadihil mulk. We're reminded on and on and on, aren't we? At every conclusion, at almost in every other verse, at every moment, at every corner, as we traverse through the Quran, we are reminded of the impending hour. We are reminded of that day of profound responsibility and mas'uliyah. The day in which Allah says, كُلُّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. If there was a flood coming now, I would ask you, would we know? Most often they say the reason people get taken up in floods or hurricanes, especially earthquakes, is because you don't know it's coming. You don't know when it will come. You know that it will come. The tectonic plates under the earth must shift. Oceans will spill over. We just don't know when our home will be hit by that water. And this was the question that Abu Abdullah alayhi salam put forward towards both his friends and his foes. Both his friends and his foes. It was a question of existential importance because their entire relationship to the notion of the hour, the notion of judgment, the notion of salvation was determined by that single decision, that single act, whether to be with Hussein or to not be with Hussein. This was not a political choice.
This was not like choosing between Republican and Democrat, between the left and the right on the political spectrum. Hussein Salamullahi alayhi, again, this is after 20 years of studying the wilayah of Ahlul Bayt. I don't come to these conclusions simply. It's not yesterday. I didn't open the books yesterday on this. And you're free to disagree with me. The message of Hussein is not a political revolution. It's not like, you know, there are certain political things in his party, certain things in this party, certain things in this. No. It is the mission of existential importance. What do I mean by existential? I won't use too much professor language. Basically, it's a mission, do or die. That doesn't have to do with whether we're on the right or the left, or whether he will fit into this party or that party. The wilayah of Hussein Salamullahi alayhi is a matter of salvation or damnation. We'll see in his own words. We will see as we go through these nights in his own words. But coming to modernity, in taking stock of the message of the Quran, the urgency of the Quran, the provocative nature of the message of the Quran, and the provocative nature of the message of Hussein ibn Ali salamullahi alayhi, where do we stand today vis-a-vis Western liberalism and modernity? In looking at the beliefs and the ideas and the currents that surround us. And on the other hand, we look at the wilayah of Hussein ibn Ali and the message that he brought, which did not have a middle path. There was no middle path. There wasn't a path that people could choose. Either they were under the flag of Hussein or they were not under the flag of Hussein. It was a black and white question. Now, taking this into account of what we know about Islam and the Islam of Hussein ibn Ali salamullahi alayhi, and the urgency that the Quran emphasizes upon hastening to the hour, hastening to being aware that the hour is close, the flood is near, the earthquake can happen at any moment. We don't know. The scream can be heard. Knowing all of this, we then have to take stock of ourselves as we pursue our careers and our jobs and our professions and our wealth and equities and asset distribution and all of these things, as we pursue all of these various ventures, right? Diversifying into real estate and this and that. Fine, no problem, alhamdulillah. Mu'min should be organized in his or her finances. My brother is a money manager. He wouldn't have me say otherwise. But in light of all of that, where do we stand in terms of being prepared for the flood when it hits our home? Because that real estate is not going to protect me from the flood. Moving out of tech, out of growth stocks to blue chip is not going to protect my home from the flood. It's not going to protect that. What will be required for our spiritual, cultural, and religious life to remain viable in this part of the world? What sacrifices will have to be made in order for our deen and madhab and thaqafa diniya, our religious culture as Muslims and Shia, to remain viable? I'm not saying to remain, but to remain viable. What sacrifices will have to be made? What difficult decisions as parents? I'm a parent and many of you are parents or grandparents. What difficult decisions will we have to make in order to ensure that our madhab remains viable in this part of the world? That we don't fall into a ta'arrub ba'd al-hijrah, right? That we lose faith after hijrah, because then it becomes haram to stay in that place.
All fuqaha agree on this. Yes or no? Agha Sistani, what has he said on the condition for moving? At-ta'arru ba'dal hijra. I'm not saying it's not possible. I'm born and brought up in the West. I'm a product of the West, although I've lived in the East. So I'm kind of a bridge. You know, I was interviewed by Al-Iraqiyya. Just a few days ago, I was a guest of the Haram of Abi Fadl al-Abbas alayhi salam for a conference with Ayatollah Sayyid Ali al-Milani and others. We were together in the holy city of Karbala. I've just returned, actually. And I was interviewed on Al-Iraqiyya in Arabic. Inshallah, when it comes out, we'll put the subtitles in English on it. But interestingly enough, the person who's in charge of the Islamic program for Al-Iraqiyya, which is equivalent of the BBC of Iraq, basically. So we did a half-an-hour show in the Sardab in the basement area of Hazrat Abbas's shrine. He asked me a very interesting question, Ajib wa Gharib. Normally we think that these brothers and sisters in the East can't wait to give up their passports and come here, right? For the American dream or the Canadian dream or the British dream or whatever you want to call it. He turned to me and he asked me in Arabic, is it viable to be a Shia where you are? I thought we were going to be singing the praises, Kumbaya, and that interview turned out into be a very different style of interview that I was expecting on Al-Iraqiyya. He said, how viable is it and possible, yani the imkaniyya, to be a real Shia, sidqan wa haqqan, bima'na al-kalima, in the meaning of the word of being Shia, living where you are. I looked at him. Ajib wa gharib. I told him, Habibi, ya Ustad, su'alik latif wa daqiq. I said, your question is deep. I thought this was just a photo op. I thought this was a photo op, you know, get the Western guy on TV or something, right, who speaks Arabic. It turned out to be much more than a photo op. It turned out to be a very profound dialogue between me and him. Inshallah, it will be aired on Iraqi national television during these ayam of Muharram. And that got me thinking, is Shiism viable? As we know it, not of what people want it to be, of what we know of it. I believe it is. I believe it is. I don't believe it is unviable. But I believe, and this is based on my years of education and also the fact that I was the director of religious affairs of a Sadiq school for almost 9.5 years. We have 850 students from kindergarten to grade 12. I've now moved from there. I'm a professor of religious studies, but I've been on the front lines for almost a decade. Before that, I was doing other things, but I was on the front lines in the largest Shia school in North America. So I've seen a thing or two in terms of where our kids are going, whether they're Iraqi or Lebanese or Khoja or Pakistani or whatever they are, or Iranian or whatever, because we have all the different colors and shapes and sizes in our school, or male or female. And I would stay up at night. And if I remember one thing from my time there, and now our wonderful brother Sayyid Asad Jafri has taken my position there. May Allah give him tawfiq in his role there, inshallah. My dear brother, I would stay awake at night, honestly. You know, people ask me, you know, Shaykhna, do you lose sleep? And I said, yes, I lose sleep. What makes you anxious? What makes me anxious is, can we live up to the message of Ali, salamullahi alayhi? And what will it take to do it? We're going to talk about this over the next 10, 11, 12 nights. And we're going to bring up some uncomfortable conversations about it. But conversations that I believe as an educator and an academic need to be had. We need to have these conversations, because when we turn to the Quran, what do we read again in Surah Yasin? Tanzeelul Azizur Rahim, litunzira qawman ma unzira aba'ahum fahum ghafilun. Right? And he was sent but to warn them, to give them tanzeer, to warn the people.
right? Because perhaps their forefathers were ghafil. They weren't aware of what the message was. And out of this Quran emerges the Prophet and the epic of the Quran and the story of the Quran, with the Prophet at the center as the hero par excellence. And the heroism of the Prophet. The heroism of the Prophet rests in two things: recognition and education. The people had to first recognize that they have to improve. They had to recognize that there is problems within them, that there's growth to be done, there's progress to be had, there are steps ahead to be made. And number two, they had to be educated. That the heroism of the Prophet was in his position as an educator who brought the truth to people's hearts, and through that brought about a transformation that was never seen in human civilization. And thus when he said, Husaynun minni wa ana min Husayn, when he said that Husayn is from me and I am from him, in the sense that there was no daylight between the two in their role as educators of human civilization, in their role as delivering the message of warning that the hour is near. What have we made of our life? What have we done? In thinking of this question of viability, and just the whole question about the revolutionary, I don't use the word revolutionary, I will say the transformative message of the Prophet, we turn to the conversation between Ja'far ibn Abi Talib and the king of Habash. It's a very interesting conversation, and it has many points that have to be grasped. Before that, recite a salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Ja'far ibn Abi Talib, along with the other Muslims, make hijrah to Abyssinia. I'm sure all mu'mineen know the story of the seerah of the Prophet and the companions of the Prophet. The seerah tells us something very profound. The king of Abyssinia meets Ja'far. Ja'far is the representative of the Muslims. He meets them. And he says, for the sake of this religion, قَدْ فَرَقْتُمْ قَوْمًا. You have left your people. For the sake of this religion, what is this religion? What have you left behind? Why have you made such a drastic move? The king wanted to know, what brought you all the way here to seek refuge with a Christian king from the Hijaz? He says something so interesting. He says, Ayyuhal Malik, O king, kunna qawman ahl jahiliyyati. First, he says, we were a people of jahiliyyah, of barbarism. Jahiliyyah doesn't mean ignorance, it means barbarism. Jahiliyyah is not, the opposite of jahiliyyah is education, is enlightenment, blindness. Okay? So we were people of blindness, we were people of barbarity, we were people without a civilization of morals, of guiding morality. Na'budul asnam. We worshipped statues, idols. وَنَأْكُلُ مِيتًا. And we were eating dead meat that was not done through the riha, right? وَنَأْتِيَ الْفَوَاحِشِ. And we were engaging, he says, in all kinds of obscenities, fawahish. وَنَقْتُعُ الْأَرْحَامِ. And we were cutting off our blood relations. وَنَسِيءُ الْجِوَارِ, or jawar. And we were forgetting about our neighbors.
وَيَأْكُلُ الْقَوِيِّ مِنَّا دَعِيفٌ. And the strong were consuming the weak among us. We have run away from all of this because we wanted our religion to be viable. Isn't it? Why did Ja'far and them, why were they ordered to leave? Why did they go and leave their homes? Did we think deeply about this first migration? He gives the reasons. Ja'far, Salamullahi alayhi, Ja'far ibn Abi Talib gives the reasons here. Why they had to leave. So I'll ask you a question. That these guidelines that were given were not simple moral niceties. They were not left to the whims of the people to determine. They were guided by the Quran and the Sunnah. So what it means to break relations is guided by the Quran and the Sunnah. What are obscenities? Your definition and my definition could be different. Well, thank God we have a thaqalain, al-Quran wal-Athra. They tell us what an obscenity is. What's a fahisha? Because someone would say, oh yeah, okay, yeah, I don't do obscenities. Well, what does that actually mean? When we get down to the brass tacks of what an obscenity actually is, what is a fahisha? What is the definition of a fahisha? The plural is fawahish. What is that? Ahlul Bayt have told us. Allah has told us. It's not up to me and you to decide what we think is a fahisha, or is a little fahisha, or a big fahisha, or a minor fahisha, or not a major fahisha, or whatever it is. No. The Messenger of Allah had determined that already for them because he was a tarjuman of the kitab of Allah. He was the spokesperson on behalf of the book of Allah. He was the lisan of Allah. He was the one whose will reflected the very will of Allah subhanahu wa ta'ala. And likewise the Imam. And that's why Imam Rida alayhi salam tells us that the imamah is so important. Imam Rida, in a beautiful conversation which is narrated in the Ma'ani of Saduq and other sources, he tells us that this issue of the imamah, it's not a matter of the people's taste or choice. You know, he met one of his companions in Mar, in one of the cities in Iran. And he told him, you know, yeah, oh Imam, people are clamoring, they're arguing, they're saying, no, I think the Imam should be like this, or I think the Imam should be like this. No, these are the qualities of the Imam. No, I don't accept this Imam, I don't accept. Oh, it's opened into what we call the public sphere, right? What Rawlsian may call, right, the kind of public good in a kind of Rawlsian sense. Anyway, I don't want to bring political science here. But the point is that it's not open to the public sphere to determine. But in this case, the public sphere, the civil society, so to speak, was having a discussion about, maybe Ar-Rida is the Imam, not the right Imam, we don't know, let's argue about it and have a whole discussion based on our opinions and our ideas. This kerfuffle and argument and, debate came to the news of Imam Rida alayhi salam. And his companion told him what was going on. And the Imam said something so powerful. He says, جَحَلَ الْقَوْمُ وَخَدَعُوا عَنْ عَدْيَانِهِمْ. He says that ignorant is the people and misled are they with regards to their religion. That if they understood that the very perfection of religion, that the very will of God rests on the concept of imamah. And wilaya, I would add. He didn't say wilaya, but we would say /wilaya. Because the two are synonymous here. هَلْ تَعْرِفُونَ قَدْرُ الْإِمَامَةِ. He turns to his companion and says, do you know what the position of the imamah is? What the weight of the imamah is? وَمَحَلُّهَا مِنَ الْأُمَّةِ فَيَجُوزُ فِيهَا اخْتِيَارُهُم. And with all of that, it's just allowed for people to choose the imam of based on their taste, their choice, their feelings.
their individual search for authenticity based on maybe what their therapist tells them. Who knows? No. It's not a matter of how we feel or what makes us identify with this or that, or I don't know what kind of mumbo-jumbo language someone will come up with here. It has nothing to do with that. It has to do with the very will of God. And the very will of God is not left to a discussion with, with our friends or a therapist. See how we feel, like some kind of water cooler talk. No. No. It has nothing to do with that. He says, فَإِنَّ الْإِمَامَ أَجَلُّ قَدْرًا. The Imam has the ajallu, the most sublime of weight. وَعَظَمُ شَأْنَهُ, and the most lofty of positions. وَعَعْلَى مَكَانَهُ, and the highest of ranks. How then could it be left to the people? Yet when we go to Surah Yasin, again, these messengers are brought to them, so on and so forth. Messages are brought. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. That this message of truth is brought. حَقَّ الْقَوْلُ. They have no excuse. حَقُّ الْقَوْلُ. But most of them don't believe. You know why? Because they just take it to the court of public opinion. Right? Let me see what everyone at the coffee shop thinks about it. Let's have a chat about imamah. See how we all feel about it. Maybe Ar-Rida's imam, maybe he's not, maybe he is, maybe he isn't. Just like, shooting the hot air, right? لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. If we knew the power of this verse from Surah Yasin, Allahu Akbar, that this punishment from Allah is so decisive. Why the fuss? Because to leave behind the perfection that Allah has brought is essentially to choose to be deaf, dumb, and blind. And Allah rewards that, so to speak, or responds to that with a very specific response. We'll get to that in a bit from Surah Yasin. But often my students ask me, mu'mineen ask me, brothers ask me, even non-Muslims ask me, what's the big deal, man? What's such a fuss about all these things? Everyone gets, so excited and riled up about this. It seems your book is, especially Yasin. It's on, it's quite hammered home there. And I think that's a surah that we recite quite a bit. Probably most of us have memorized it, alhamdulillah. Why? Why the fuss? I'll tell you why. At least why I think it is. Or why my teachers have told me, or what we have read from in the ahadith and the tafsir. Because it is a failure to live by the very conditioning of our existence, that Allah has created us for a purpose. Allah has brought us into this world for a reason. To then live a life of complete willful ignorance in light of all of that, a life of no ontological significance, of no weightiness in terms of our connection to being and our presence in the universe, a morality that is governed by divine principles, transcendental principles, then to just shoot the hot air after all of that. It's such an epic failure. It's such an epic squandering of human capabilities that is something that is not tolerated in the Quran. It is not tolerated. And this is why the Ummah of Rasulullah was chosen.
This is why the kalima of La ilaha illallah carries so much weight if we knew the meaning of La ilaha illallah, Allahu Akbar. Of what happens to us when we say La ilaha illallah. There is no God but God. How transformative the kalima of La ilaha illallah is. Wa Muhammad Rasulullah wa aliyun waliyullah. How transformative these words become because they take us from darkness to light. But that's only and if only when our social and moral fabric of our existence is shaped by that testimony of faith. Otherwise, then once again, we're in the problems that are put forward in Surah Yasin. Again, back to square one. Back to square one. That the Muslims are asked to be truly people of insight, people of depth, people of enlightenment. The standards set by the Prophet, as we read in the seerah, were very exacting and uncompromising. The ethical, moral, and theological standards, because it's not enough to be a good person, but to understand for whom we are being a good person. It's not enough. What we believe and what we do are equally important to one another. The standards that the Prophet set were exacting. Thus, how could Amir al-Mu'mineen then be his splitting image? But the problem with human beings, and this takes me fast forwarding to the civil rights movement in the United States, when Martin Luther King was speaking, you'll see sometimes we'll jump from civil rights to the Quran when the message connects here. King says in one of his speeches, in one of his essays rather, why did so many people go along with segregation? With these Jim Crow laws and all of these things. Why did so many people go along with this barbaric attitude towards the other, towards people that look different? You know what King says? It's so interesting. He says that it's because they're weak. They're weak. Because most human beings don't want to think. They just want the circus and the food and the enjoyment. What happens, happens. And he says, because most men, by men he's referring to human beings in general, we'll say most human beings, King says himself, Martin Luther King, he says, because most human beings frankly don't care. That's why they say, what's the fuss all about? Because they don't really care. They just are content with the backyard and the barbecue, the small little plot of land they've worked so hard to buy, and that cold iced tea, so to speak, on a hot summer day. And that's enough. What King says is that's just not enough. That's the stupidity of human beings. And that's why we are where we are. That's why we are where we are, because most people don't care. أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, Allah says. Most people don't even believe. Because they don't, frankly, care to believe or to be educated. First to recognize and then be educated. To accept the message of enlightenment of the Prophet. And thus people would sit back and watch these inhumane things being done in the name of whatever. I mean, the same thing would go for the Christians living in South Africa that sat back and watched apartheid, or the church during the Second World War, right? As they watched as millions of Jews were taken to the gas chamber, where the Catholic Church was probably one of the most powerful players in Europe at the time, before Vatican II, before the mass secularization. Yet they stood by, isn't it? But us as being Husseinis, inshallah, we cannot stand by to these things. We cannot. It is impossible.
we would then be embarrassed to call ourselves Husseini, be ashamed to take the name of Imam Hussein alayhi salam. I mean, that would just be the height of double standards then, wouldn't it be? I don't use the word nifaq because that's too strong of a word to use. That has certain qualifications to use that word. Let's say double standard. Yet, King goes on, and I'll conclude on this note, and we'll remember Abu Abdullah and the tragedy of Abu Abdullah alayhi salam. King concludes something so beautiful here. He says, science seeks to observe things. Religion interprets. Religion tells us why it is what it is. Science doesn't tell us that. Science observes facts, or what they call objective facts, which I don't think really are objective facts. I mean, it's changing every day, right? I mean, just look at COVID, at the vaccine, right? Or all these different things. It's evolving, right? That's what I mean. The science is evolving itself. I'm not saying science is not important. I'm saying it's evolving, right? But he says religion. This is super important. Please pay attention. Religion prevents science from doing two things. It prevents the march of obsolete materialism and moral nihilism. Moral nihilism meaning that there is no more morality. Nihilism meaning nothingness. Nothingness. This is Jahiliyyah. Jahiliyyah was nihilism. This is my point. One of the translations of Jahiliyyah is moral nihilism. We have to understand Lugha Arabiya, Lugha Amiqa Jiddan. Arabic is a very deep language. It has many meanings. The word jahil, jahal. It's used in Urdu as well, of course. One of its meaning is moral nihilism, meaning to live without a transcendental moral code, like to be hopeless in our morality. Right? Because they didn't believe in a life after this death. It was like, just do whatever I want in this world to the max, and there isn't anything after I die, right? That's the argument that they put forward in the Quran, right? The mushrikeen. But my dear brothers, what happens when religion no longer is able to do this? You know what scholars argue today? People like Charles Taylor, Rob Dreher, Rabbi Jonathan Sachs, Hussein Nas. These are really intelligent people, a lot smarter than me. Charles Taylor was the chair at Harvard for many years. He's very old now. He's Canadian, though. Huh? They essentially say that we live in a post-moral world. Post-Christian and post-moral. This is the consensus now among philosophers in America. Post-Christian, post-moral, really. Post-moral in the sense of a morality that's conditioned by transcendental values or divine values or religious values. The post-Christian age is long already in. I mean, it is what it is, whether it's on the right or the left. Christianity in its current form has not been able to live up to what King hoped that it would live up to. So now that America has entered into a post-Christian nation, or Canada, Europe, all the same, you can read Mass Exodus, published by Oxford University Press. Excellent work about the history of disaffiliation in the Christian church. A very important book, statistical based, just good statistical analysis. I'm sure there's some academics here, people are interested in these things. And basically what it shows is we're in a post-religion, post-Christian age. So the question that I ask here is, are Muslims consigned to the same fate? If so, what is the future of my daughter? She's 7 years old today. What future lies in front of her? We'll explore this question.
What is her future? I honestly don't sleep at night thinking about this question. What is the future for her as a Muslimah? Inshallah, to be muhajjaba, she's only 7. Shia. What is her future? If she wants to be a Shia in the meaning of being Shia. I'm not talking about what people want. People want a lot of things. Like Imam Rida said, people get together in the town square to talk about all kinds of things. That don't mean anything. I'm not talking about the town square. I'm talking about Shia in the meaning of Shia. Muslim in the meaning of Muslim. Mu'min in the meaning of Muslim, of Mu'min. Not in what is discussed over a chai or something like that. Not on the basis of riwayat, on adillah, on evidences and things like this. I believe that something can be defined known as Shiism. I'll get more to this later. But I truly believe that something like this can be defined. And I also believe, in the bottom of my heart, that when people say, oh, there's different interpretations, that is a complete cop-out. They themselves don't even know what all the different interpretations are. They just use that as an excuse because the mind may be too weak or incapable or don't want to actually engage in a serious, honest, intellectual dialogue about something. Isn't that what the first Khalifa did to Amir al-Mu'mineen? Ibn Sa'ad narrates, when Amir al-Mu'mineen came to him about the haqq of Fatima al-Zahra and Fadak, he came to him and he said that the Quran is speaking. This narrated, Ibn Sa'ad narrates it in Tabaqat al-Kubra, one of the most famous books and earliest books on the biographies of the companions of the Prophets. What does he say? The first Khalifa says to him. He says, أنت تعلم ما تعلم وأنا أعلم ما أعلم. You know what you know, I know what I know. Well, no, that's not an answer. It's not a jawab to Amir al-Mu'mineen. Because he didn't want to deal with the hard fact, the hard, cold truth. So people say this because they don't want to deal with hard, cold truth sometimes. Or they don't want to engage in a level 2 or level 3 discussion about something. One, either because they're incapable of it, or they don't know what the answers are going to come out of it, or they're not trained about it, but they wanted to start something just to show they may have read 1 or 2 books, or maybe know the index of a book. But once you go past the index into the depth of the book itself, then they say, oh, yeah, that's your opinion. No, that's not how it works. That's not intellectual dialogue. That's not intellectual discourse. There's nothing academic about that comment. It's a childish comment. It's a childish comment that's used to escape difficult issues. Right? People use ambiguity as a way of saying, oh, it's ambiguous. Yes, certain things, of course, are ambiguous. But many things are not ambiguous. This again comes back to what King mentions to us about weak minds, colonized minds, brittle minds, the minds that just can't handle the truth and don't want to talk about it. Just like they didn't want to face the truth of what the church was acquiescing to at that time, of the terrible and barbaric treatment of African Americans. They didn't want to come to that altar of truth. Some people, I'm not saying all, many Christians stood up, of course, like Dr. King and others. And the same goes for Imam al-Hussein alayhi salam. Can you imagine? The Imam leaves the city of Medina for Makkah. He arrives in the city of Makkah, in the city of Makkah. The Imam of the Muslims, the grandson of the Prophet. This floors me. And he could not complete his Hajj. If that is not a musibah, I don't know what a musibah is. How in 61 years did the Muslim Ummah go to the point where the very Imam of the Muslimin, the youth of paradise, the very grandson of the Prophet of Allah, the son of Fatima and Ali, could not complete his Hajj? Isn't it? Right? We read that there were 33 assassins in the tawaf. That they would kill him even if Hussein ibn Ali was hanging to the cloth of the Kaaba, the riwayat tells us.
متعلقا بأستار الكعبة. Even if he was hanging to the cloth of the Kaaba, they would spill his blood on the cloth of the Kaaba itself. Where did the Muslims go? This weak-mindedness. It is on the 2nd of Muharram, the Imam arrives in Karbala, according to some traditions. He gathers his family and he begins to reflect over how estranged, expelled they are. How they are now strangers in a vast desert. Medina, their home, is no longer their home. Makkah, their home, as we say, he is Yabna Safa wa Marwa, right? He's the son of Safa and Marwa. Yet the son of Safa and Marwa is now expelled from Safa and Marwa, and the son of Safa and Marwa now finds himself in the middle of a desert, sitting with his family, saying, and Banu Umayyah has oppressed us. Our Imam is protesting to Allah subhanahu wa ta'ala. He begins to look at his family. Just contemplate over this. Nadara, thumma nadara ilayhim fabaka sa'atan. That he began looking at his family and he began to cry. Can you imagine the tears of Hussein salamullahi alayhi, such that it is as if the day of judgment is about to occur? From every tear of Hussein ibn Ali, there would be like an earthquake on the day of judgment. Hussein is looking at his family with tears. He says, "Oh Allah, we are the family of your Prophet, yet we have been thrown out an harami jaddina. Yet we have been thrown out of the sanctuary of our grandfather. We have been harassed and thrown out of our homeland." He says, this is Hussein. He says, وَتَعَدَّتْ بَنُو أُمَيَّةَ عَلَيْنَا. And Banu Umayyah have exceeded all bounds against us. فَخُذْ لَنَا بِحَقِّنَا. He says, "Oh Allah, take our right. وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. And help us against the oppressors." This is Hussein ibn Ali's words when he arrives in Karbala. The Imam then says that the people are but slaves of this world. Abidud dunya. Brothers and sisters, tonight let us not be abidud dunya. Let us not be the slaves of this world, because it was the very slaves of this world that allowed the slaughtering of Hussein to take place. He said, "An-nas abidud dunya." That human beings are the slaves of this world. He turns to his companion and he says, "Is this Karbala?" He says, "Na'am yabna Rasulillah." This is Karbala. He says, "This is truly the place of trial and calamity." The Imam says, "This is where my father brought me on his way to Siffin. This is where we shall lay to rest. This is where our caravan shall settle. This is where our men shall be killed. This is where our blood shall be spilled. Masfaku dima'ina wa jalasa al-Hussein." And now Hussein sits down. He begins to recite some poetry. He's speaking to the Zaman. It's as if the Zaman and the time and Hussein are now speaking to one another. He tells to him, "Woe to you from a friend. Kam laka bil ishraqi wal asil." He's basically saying that the time has now run out. My life has now come to its end. Could you imagine Hussein ibn Ali is speaking to the Zaman? Allahu Akbar. Abu Abdullah is speaking to the Asr, to the Zaman. And then at this moment, the women are around him and they're listening to this abiyat and this poetry of Hussein ibn Ali. Zainab turns to Hussein. She turns to him and she says to him, "My brother, these are words of a person who is about to be killed." The women begin to cry when they heard the kalam of Hussein. The ishara was enough from Abu Abdullah. They begin to cry. They could not bear losing their Hussein. فَبَكَى النِّسْوَةُ وَلَطَمْنَ الْخُدُودِ. The women begin to hit their cheeks. Kulthum begins to yell, "Wa Muhammada wa Aliya! Wa Akha wa Husayna!" Kulthum is screaming out, "Wa day'atana ba'dak ya Abu Abdullah!" That, "Oh, our loss after you, Abu Abdullah!" This is the screams of Kulthum. Abu Abdullah says, "Ya ukhta ta'azzi bi'azza. Oh, my sister, take solace in Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Kulthum, Ya Zainab, Ya Fatima, Ya Rubab." He begins to address his women. He says, "After I die, I ask you,
Do not tear your outer garments. Do not utter any unjust words. In another report, when Zainab heard these words, she ran out barefoot from her tent. Imagine this scene. Zainab is running out of her tent towards Hussein. She is barefoot. The riwayah says that her abaya is dragging on the ground as if nothing could wait. She says, Ya Allah, layt al-maut addamani al-hayat. She says, if only I died now. فَمَاتَتْ أُمِّي فَاطِمَةَ. For my mother has died, and my father Ali has died. وَأَخِيَ الْحَسَنَ. And my brother Hassan has died. Now what are we to do? Hussein looks at his sister. فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ يَا أُخْتَا. Hussein looks at his sister Hussein. He says, oh my sister. Meaning, what am I to do, Ya Zainab? Hussein was speechless in front of her. Zainab turns to him and she says, shall I be killed instead of you, oh my brother? Then can I replace you? This was the sacrifice of the sister for her brother. Imagine the love between sister and brother. His eyes filled with tears, riwayat tell us. His heart is broken. He says that my heart breaks from these words, O Zainab. He then embraced his sister and they both began to cry. Wa Husayna wa Ghariba wa Imama. Brothers, turn to Sahib al-Asri wa Zaman. The Hilal of Muharram has come. Where is our Imam? What Zawiya or corner is our Imam in? When he hears these words, imagine the tears of the Imam running between Abi Fadl al-Abbas and Imam al-Hussein alayhi salam, saying, Wa Husayna, Wa Imama, Wa Ghariba. Imagine the sadness of Sahib al-Zaman. These are the nights of huzn and sadness, my dear brothers. Why does the Imam speak in existential terms? Meaning, why is there the consequence of turning against the Imam hell and the consequence of following him heaven? We turn to two lines from Rubab, and I will conclude on this. When she was brought to Sham, she found the head of her husband Hussein. She ran towards the head of her husband Hussein. She put the head in his lap according to the traditions. She begins to kiss the head of her husband Hussein salamullahi alayhi in her lap. And she says, Wallah ma nansa Husayna. We will not forget our Hussein. قَدْ غَادَرُوهُ سَرِيعًا بِكَرْبَلَا. That my husband of Hussein was left alone on the ground in Karbala. Oh Allah, for the sake of what happened to my husband Hussein, for the sake of the fact that my husband was left alone, سَرِيعًا تَحْتَ الثَّرَى, as the riwayat tell us, alone on the hot sands of Karbala. For the sake of this, oh Allah, deprive the earth of Karbala of water. This was a dua of Rubab salamullahi alayhi. Deprive this land of water. Oh Allah, do not irrigate this water because my husband died thirsty. Huwa qutila atshanan. He is the one who has been killed thirsty on this land. Imagine this is the kalam of Rubab salamullahi alayhi. Ala la'natullahi ala qawm al-zalimin. Matima Hussein. Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya एक चांद मुहर्रम के
तू बदली में चला जा एक चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा एक चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा तुझ देख के मर जाए ना तुझ देख के मर जाए ना बीमार है सुगरा एक चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा मुहर्रम के तू बदली में चला जा गर ज़हरा का लुटने की खबर तूने सुनाई तुझ देख के रोती है मुहर्रम में खुदाई 1400 बरस बीते 1400 बरस बीते सब करते हैं शिकवा एक चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा एक चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा मिलने के लिए भाई को बेचैन बरी है कब से अली अकबर की ये राहों में खड़ी है बेचरी है ये मुद्दत से बेचरी है ये मुद्दत से तू ना नजर आ एक चाँद मुहर्रम के तू बदली एक चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा वीराने घरों में ना इसे नींद है आती अकबर की जुदाई है इसे खून रुलाती कदमों के निशान ढांप के कदमों के निशान ढांप के बैठी है सरेरा एक चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा एक चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा गिन गिन के जो सुगनाने ये दिन है गुजारे कब जिंदा है तू अकबर के वादों के सहारे दिन रात तड़पती है दिन रात तड़पती है इसे और न तड़पा दे मुहर्रम के तू बदली में चला जा एक चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा भैया की जुदाई में परेशान है रहती हर रोज ये नाना को रो रो के कहती अकबर ना मिला नाना अकबर ना मिला नाना मैं मर जाऊंगी तन्हा एक चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा एक चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा Allahumma salli ala Muhammad. Please get ready for Salat al-Maghrib inshallah. And also there are those sajdaga and tasbih are set for you in front. After the namaz, please put them back the way you find them. And there are books some outside on the table. Those of you who are interested, you can help yourself to that. Give the donation for those books to Baitul Haim, whatever price you think they are. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي حجة الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. With a reminder that immediately after Maghrib and Salat, please be seated for the Urdu Majlis, inshallah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده
ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله تعالى قوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله رب. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته بحول الله تعالى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد يا من له دنيا والآخرة. ارحم من ليس له دنيا والآخرة بحق محمد وإطرته الطاهرة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. محمد وآل محمد.
دعاء الإمام زين العابدين في يوم الأربعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعة. اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك، إنك لطيف لما تشاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته بحول الله تعالى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله تعالى وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Please do not forget to put the sajdaga and the tasbih back in the pouch and put it back exactly as you found them. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنه ليس لي علم بموضع رزقي وأنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه البلدان فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري في سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله واجعل يا ربي رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. बर मोहम्मद वाल मोहम्मद सलवात। हुसैन सब तेरे कुर्बानियों का सदका है। हुसैन सब तेरी कुर्बानियों का सदका है। गमे हुसैन में आंसू फिर उसके बाद ईरान। गमे हुसैन में आंसू फिर उसके बाद ईरान। खरीद लो के ये सौदा बहुत ही सस्ता है। हुसैन सब तेरी कुर्बानियों का सदका है। मुबाहिले की ये सूरत बता रही है हमें। मुबाहिले की ये सूरत बता रही है हमें के पंजतन के मुकाबिल जो आए झूठा है। हुसैन सब तेरी कुर्बानियों का सदका है। उसे हुसैन से निस्बत ना दो खुदा के लिए। उसे हुसैन से निस्बत ना दो खुदा के लिए। जो मसलहत से हमेशा में काम लेता है। हुसैन सब तेरी कुर्बानियों का सदका है। इलाही खैर है किसकी नजर न लग जाए। इलाही खैर है किसकी नजर न लग जाए। ज़ईफ बाप का कड़ियल जवान बेटा है। हुसैन सब तेरी कुर्बानियों का सदका है।
ना लूट चादर ज़ैनब, ना छीन सर से रिदा, ना लूट चादर ज़ैनब, ना छीन सर से रिदा, ये बिन्ते ज़हरा है ज़ालिम, ये बिन्ते ज़हरा है हुसैन, सब तेरी कुर्बानियों का सदका है हुसैन, सब तेरी कुर्बानियों का सदका है। सलवात। सदाती है, देखे किस्मत हमें किस दश्त में ले जाती है, देखे किस्मत हमें किस दश्त में ले जाती है, और किया शहने सुए खबर शहंशाह नाम, बहर तस्लीम झुके मुतसले बाब सलाम, इज़्न पढ़कर जो गए खब्र के नज़दीक इमाम, अर्ज़ की आया है आज आखिरी रुखसत को, अर्ज़ की आया है आज आखिरी रुखसत को, और ये मक्का हमसे अब शाहे ज़मन छूटता है, आज हजरत के नवाज़े से वतन छूटता है, आज हजरत के नवाज़े से वतन छूटता है, और चैन से सब हैं घरों में मुझे मिलता नहीं चैन, सख्त आफत में है अब आपका ये नूरुल ऐन, टुकड़े दिल होता है जब रो के करम भरम करते हैं बहन, नन्हे बच्चों को भला लेके किधर जाए, नन्हे बच्चों को भला लेके किधर जाए, और शहर में चैन जंगल में अमा मिलती है, देखिए खबर मुसाफिर को कहाँ मिलती है, देखिए खबर मुसाफिर को कहाँ मिलती है, ओ अब मेरे सर के लिए तेज हुए हैं खंजर, अहल की शर पे कमर बांधे या खैरुल बशर, आपने दी थी
इसी रोज़ की अम्मा को खबर, वालिदा रोई थी वो रोज़ तलक पीट के सर, वालिदा रोई थी 2 रोज़ तलक पीट के सर। ओ इस नवासे को मगर भूल न जाना हजरत, ज़िबा के वक्त मदद करने को आना, ज़िबा के वक्त मदद करने को आना है। और ये बयां करके जो तावीज़ से लिपटे सरवर, यूं हिली खबर के थर्रा गई जरी है अनवर। आई तुरबत ये आवाज़ हबीबे दावर, तेरी गुर्बत के मैं सदक़े मेरे मज़लूम पिस, तेरी गुर्बत के मैं सदक़े मेरे मज़लूम पिस। कोई समझाना मेरी गोद का पाला तुझको, हाय आदन मदीने से निकाला तुझको, हाय आदन मदीने से निकाला तुझको। ओ कई दिन से तेरी मादर को नहीं खबर में चैन, आई थी शब को मेरे पास ये करती हुई बहन, घर मेरा लुटता है फरियाद रसूल सखलैन, सुबह को अपना वतन छोड़ के जाता है, सुबह को अपना वतन छोड़ के जाता है। कहने आई हूँ के मुँह खबर से मोड़ूंगी मैं, अपने बच्चे को अकेला तो न छोड़ूं मैं, अपने बच्चे को अकेला तो न छोड़ूंगी मैं। हाँ बुलाओ मेरा अब्बास दिलावर है किधर, वो फिदा है मेरे बच्चे पे मैं सदक़े उस पर, शिकमे गए से गो है वो मेरा है पिसर, ये सदा सुन के पुकारे, ये सदा सुन के सुगादर को पुकारे सर्व। अभी रावार को आगे ना बढ़ाओ भाई, याद फरमाती है अम्मा, याद फरमाती है अम्मा भाई। आके अब्बास ने सर रख दिया पाइने मज़ार, आई जहरा की सदा मैं तेरी गुर्बत के निसार, अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार, ध्यान भाई की हिफाजत कर रहे ऐ दिल, ध्यान भाई की हिफाजत कर रहे ऐ दिलदार। कोई गुर्बत में उसे मार न डाले बेटा, मेरा शब्बीर है अब तेरे हवाले, मेरा शब्बीर है अब तेरे हवाले बेटा। Please recite a Surah Fatiha for the sponsors of tonight's Majlis, Mr. and Mrs. Aziz Sadiq and Mr. and Mrs. Javed Sadiq. Bismillah. Also, please recite a Surah Fatiha for Akbari Fatima Shabir, daughter of Mir Wajid Hussain Khan. Bismillah. Surat al-Mustaqim. Bismillah.
A reminder that our program will starts every day at 7 p.m. sharp, so please be here for the English part of the Majlis, followed by the Salat al-Maghribain. And we are happy to, we are very fortunate to have with us Maulana Ali Haidar Abidi, and you're all familiar with him. With a loud salawat, let's welcome him to the minbar, inshallah. Allah. Once again, with a loud salawat, let's welcome him to the minbar, inshallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات على محمد وعلى محمد. माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, सेहत व सलामती दे। कितने हमारे वो हजरात हैं कि जिनको अब से 32-33 साल पहले मैंने जब यहाँ पे घर हुआ करता था, उस वक्त से मेरा सिलसिला जो है आपकी खिदमत में है और बराबर मुलाकात भी होती रहती है। लेकिन उम्र का एक तकादा होता है, जैसे आप हजरात ने बुढ़ापे में कदम रखा है, हमने भी बुढ़ापे में कदम रख दिया है। अल्लाह आप सबको इस अज़ाए अहले बैत के सदक़े में सलामत रखे, आपके बच्चों को सलामत रखे और आपके बच्चों के रिज़्क़ में खैर व बरकत दे। और मोमिनीन आले मोहम्मद जहाँ जहाँ जहान में अज़ादारी बर्पा किए हुए हैं, परवरदिगारा उन तमाम अज़ादारों को सलामत रखे, अज़ादारी को कायम व दायम रखे, जुलूसों को और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह दे। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। मशहूर मारूफ़ कुरान मजीद की आयत है। माशाअल्लाह से जितनी भी अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम की मदह में कुरान में आयतें आई हैं, इन मजालिस के फैज़ से बच्चों तक को जो है वो अज़बर याद हो जाती हैं। ये जो पहला अशरा कहलाता है, ख़ास तौर से ये एक ख़ास पुरसे के अय्याम हैं हमारे, जो हर जगह के ऊपर पूरी दुनिया में अहले बैत के लिए अज़ाए सैयदुश्शुहदा बर्पा की जाती है। और ये तुर्रे इम्तियाज़ है हिंदो पाक का कि मुकम्मल 2 महीने 8 दिन हम उन तमाम लज़्ज़ात, उन तमाम चीज़ों को तर्क कर देते हैं जो ज़ीनत की शक्ल में आए या लज्जत की शक्ल में आए या जिससे इज़हार मसर्रत होता हो। यानी ये वो 2 महीने 8 दिन हम मखसूस करते हैं अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के लिए। ये एक इज़हार मोहब्बत कहिए या तरीक़ा मोहब्बत कहिए, शरई इसकी कोई हैसियत नहीं है कि आप 2 महीने 8 दिन गम मनाए, लिबास काला पहने, शरई कोई चीज़ नहीं है। ये तकाज़ा मोहब्बत है कि 2 महीने 8 दिन तक अहले बैत अतहार वैसे तो 1.25 साल जेल में रहे, मगर जो सिलसिला 28 रजब से सफ़र का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शुरू हुआ और वो इख्तिताम हुआ शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, उसके बाद दूसरा सफ़र शुरू हुआ जिसको कहते हैं असीरान करबला, वो तमाम हुआ 1.25 साल के बाद
8 रबीउल अव्वल को, जो शहादत इमाम हसन अस्की अलैहिस्सलाम ने। बहरहाल ये 2 महीने 8 दिन मखसूस हैं अहले बैत के लिए, जिसमें हर चीज़ से हम किनारा अख्तियार कर लेते हैं, ख़ास तौर से इन ममालिक के अंदर कि जहाँ के ऊपर जिद्दत है और तरक्की है और हर तरह का। वो हमारे भी अपने बच्चे सवाल करते हैं, और पूरी दुनिया में 2 महीने 8 दिन हमारे इस कौम के अलावा जो हिंदो पाक से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके अलावा कहीं पर भी 2 महीने 8 दिन गम नहीं मनाते, मगर इज़हार मोहब्बत है हमारा। और हमारे बच्चे भी जो यहाँ पैदा हुए वो भी उसके आदी होते हैं। ये सब ज़ाहिर है कि इस वक्त जो मौजूदा दौर है, इसमें किसी के पास वक्त नहीं है कि वो लाइब्रेरी में जाकर के किताबें तलाश करे या बाज़ार से किताबें ख़रीद के लाए और अहले बैत का ज़िक्र या दीन के बारे में पढ़े। जो एक किताब अल्लाह ने हमारे लिए भेजी है, वो भी 99.9 जो है वो ज़ीनत के तौर पे रख दी जाती है कि जिसको सिर्फ बोसा देना होता है। चुनांचे एक वाक़या मैंने देखा, किसी साहब ने इंटरनेट पे भेजा कि एक टीचर ने अपने क्लास में ये ऐलान किया कि मैं लाइब्रेरी बना रहा हूँ, आपके पास वो किताब जो पढ़ी ना जाती हो, किताब है आपके घर में पढ़ी ना जाती हो, प्लीज़ आप मेहरबानी करके वो ले आइएगा, हम लाइब्रेरी की ज़ीनत बना देंगे। नेक्स्ट डे हर बच्चा किताब लाया, हर बच्चा किताब लाया। क्या लाए हो, हर एक से पूछा तो उन्होंने कहा कि हुजूर ये किताब हमारे घर में है, इसको पढ़ता कोई नहीं, तो हमने सोचा यही ले जाएं। जितने थे 100% लाने वाले सब ने कुरान मजीद ला के दिया, सब ने कुरान मजीद। ये बदनसीबी और बदबख्ती है हमारी। इसीलिए अल्लाह ने के नबी ने जो है कुरान का इंतज़ाम इस सूरत से किया कि सीनों में उतर जाए, जहनों में उतर जाए, और इस तरीके से। तो अब हमारे पास सिर्फ एक मिंबर रह गया जिससे हम दीन भी बयान करें, अहले बैत के फ़ज़ाइल भी बयान करें। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। और ज़ाहिर है आपसे बेहतर कौन समझ सकता है तारीख़ मिंबर क्या है। मैं चाहता हूं कि आज की मजलिस में आपको ये भी बतला दूं, मिंबर तो आपने सुना है मगर ये नहीं मालूम है कि मिंबर बना कब है। दूसरा मिंबर तो हमें याद है कि गदीर में बना था और वो उठा के इमाम बाड़े में ले आए हम। जाकिर तो यही पढ़ते हैं ना, गदीर में मिंबर पड़ा हुआ, हर बच्चा जानता है कि मैदान गदीर में रसूलुल्लाह ने पैगाम नहीं दिया जब तक मिंबर नहीं बन गया। जैसे भी बना, पालाने शुदा उतार के बनवाया, हुजूर ने फरमाया। मगर जो सबसे पहला मिंबर बना वो मदीने में बना, और उसकी इब्तिदा यह है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से माइग्रेट करके मदीने तशरीफ़ ले आए, तो अहले मदीना शहर जो है उन वहाँ चूँकि पूरा का पूरा कंट्रोल यहूदियों का था, वो वहीं के रिहायशी थे, ख़ानदानी तौर पे हमेशा के रहने वाले थे। उन्होंने इजाज़त नहीं दी मदीने में आने की, और ना हुजूर मदीने में आए हैं। जो नाम लिया जाता है मदीने का, हुजूर आए हैं क़ुबा में। क़ुबा एक महल्ला है, इलाका है, क़रिया है जो मदीने से मिला हुआ था मगर मदीने में शुमार नहीं होता था। आज भी मदीने में शुमार नहीं है। मदीना अलग है और क़ुबा अलग है, उनकी म्यूनिसिपैलिटी अलग है, उनका इंतज़ामिया अलग है। खुदा आपको तौफ़ीक़ दे हज और उम्रे की, अगर आप तशरीफ़ ले जाएँ। और ज़ाहिर है अब तो वो शहर का हिस्सा है, मिला हुआ है, मगर वो क़रिया कहलाता है और अलग है। वो आपके लिए एक शरई तौर पे हुक्म है कि अगर मदीने या मक्के में आप जाएं तो आपको अख्तियार है कि नमाज आप पूरी पढ़ें या कसर पढ़ें, यह आपको अख्तियार दिया है शरीयत ने। मगर अगर आप मदीने मस्जिद नबवी का जो इलाका है वो छोड़ के आप क़ुबा में चले जाएं तो आज भी आपको वहाँ पे अगर ज़ोहर असर की नमाज़ पढ़नी पड़े, ईशा की पढ़नी पड़े, तो आप कसर पढ़ेंगे, क्योंकि वो मदीने का बाहर शुमार होता है। जनाब अय्यूब अंसारी का मकान था, वहाँ आपने क़याम फरमाया, यहूदियों से मुआहदा किया जब, क्योंकि उनकी असलाह की और शराब की सप्लाई थी। मक्के वालों ने एहतजाज किया कि ये आ गए हैं और हालात को भी बतलाया, तो उन्होंने ये मुआहदा किया, मैं मदीने में एंटर नहीं होऊंगा, मैं मदीने में नहीं आऊँगा। वो तफसीलात इंशाअल्लाह आइंदा मजालिस में अर्ज़ कर दूँगा। मदीने में नहीं आऊँगा जब तक कि तुम खुद दावत ना दो। हुजूर ने मदीने में कदम नहीं रखा। उस मुआहदे के तहत जब आहिस्ता आहिस्ता लोग घटना शुरू हो गए, मदीने के रिहायशी, यानी उन्होंने कलमा इस्लाम पढ़ना शुरू कर दिया और अब तादाद बढ़ती चली गई, तो ख़ुद उन्हीं लोगों ने दावत की कि हुजूर अब आप मदीने में आ जाएँ। जब आप शहर में आ गए तो वहाँ पर आज भी एक जगह है जिसकी ज़ियारत कराने जाता है कि ये वो जगह है जहाँ पर नमाज जुमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा पढ़ाई। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद, और इससे बेहतर एक मरतबा बाद बुलंद सलावत पढ़े।
तो हुजूर जुमे के साथ और जुमे के अलावा रोज़ाना खुतबा देते थे। वहाँ पे एक दरख्त था, उसकी टेक लगा, जब थकते थे, ज़ाहिर है तेज़ धूप है, गर्मी है, उसमें पसीने में शराबोर हो जाते, तो आप उस दरख्त का सहारा लेते। एक खातून जो मुसलमान हो गई थी, वो रोज़ाना देखती थी, हुजूर के पसीने को देखती थी, उसे रहम आया और उसने आके एक रोज़ कहा कि हुजूर मेरा बेटा जो है वो नज्जार है, बढ़ई है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके लिए एक मेंबर बनवा दूँ, आपके लिए एक मेंबर बनवा दूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है बनवा दो, मगर शर्त यह है कि इंस्ट्रक्शन मैं दूंगा, मेंबर कैसा होना चाहिए, किस तरीके का। मंजूर है। बेटे को बुलाया, हुजूर की खिदमत में पेश किया, हुजूर ने तरीक़ा बताया कि मेंबर बनाओ, कैसे बनेगा वो आपने बताया। कहा 4 सीढ़ियों का मेंबर, जो आपका मेंबर है 4 सीढ़ियों का मेंबर बनाना है। बन गया। ये जो ऊपर का है हमारी ज़बान में उसको कहते हैं अरशा, जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुआ। ये थी मेंबर की तारीख़, हुजूर की ज़िंदगी बना। अब जो चीज़ मेंबर से बयान होगी वो दायरे के काबिल यकीन होगी, इसलिए कि मेंबर जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वो एहतराम पूरी मिल्लत इस्लाम में आज तक कायम है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि मुसलमानों ने हुजूर की ज़िंदगी को 2 हिस्सों में बांट दिया। जो चीज़ मेंबर से कहें वो काबिल अमल है और जो चीज़ नीचे कहें वो काबिल अमल नहीं, क्योंकि ऊपर रसूल है मेंबर पे और ज़मीन पे ख़ानदान की बातें, रिश्तेदारों की बातें, दोस्तों की बातें, वो काबिल अमल नहीं है। हमारे ईमान के लिहाज से मेंबर पे भी रसूल हैं और ज़मीन पर भी रसूल हैं। लेकिन कुरान की आयत है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाहियुन यूहा, ये मेरा नबी कलाम नहीं करता जब तक कि वही इलाही नाजिल नहीं हो जाती। तो मेंबर पर भी मुताबिक वही कलाम है और ज़मीन पर भी मुताबिक वही कलाम है। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद। अब ये तारीख़ी सियासत देखें आप, जो तारीख़ में मिलता है। हुजूर का इंतकाल हो गया। अब इंतकाल के बाद जो साहब मसनद पे बैठ गए खिलाफत की, उन्होंने खिताब करना है, खुतबा देना है मेंबर से। अब वो मेंबर पे आए, देखा, पहली सीढ़ी को चढ़े, दूसरे को और तीसरे पे आए। उन्होंने कहा ये ऊपर तो अरशा है, यहाँ हुजूर बैठते थे और मैं इस काबिल नहीं कि हुजूर की जगह पर बैठूँ, लिहाजा वो अरशे पे नहीं बैठे, तीसरी सीढ़ी पे बैठ गए। ये तारीख़ है। अब इसके बाद उनका इंतकाल हुआ, दूसरे नायब उनके आ गए, वो पहले जीने पर बैठे, देखा, उसके बाद दूसरे को देखा, जब तीसरे को और चौथे को देखा, कहा चौथा तो अरशा है, वहाँ बैठ नहीं सकता, रसूलुल्लाह की जगह है। तो तीसरे के ऊपर एहतराम में मैं नहीं बैठता पहले खलीफा की, वो दूसरे पे बैठ गए। अब जब उनका इंतकाल हुआ तो तीसरे आए, उन्होंने पहली सीढ़ी को देखा और पूरे का जायज़ा लेने के बाद में कहा ऊपर अरशा हो गया, हुजूर की जगह है, वहाँ कोई बशर नहीं बैठ सकता, लिहाजा तीसरा पहले के उसमें जब दूसरे नहीं बैठे तो उनका एहतराम मुझ पर भी वाजिब है। उनके एहतराम में तीसरे को छोड़ा, उसके बाद में दूसरे को उन्होंने कहा कि जब उनका एहतराम है तो मुझसे पहले जो है उनका भी एहतराम है, उसको छोड़ के पहले पे बैठ गए। हम इसको कहते हैं सियासत। जी मेंबर तो ख़त्म हो गया, इसलिए कि पहली भी, दूसरा, तीसरा, तीनों की तीनों सीढ़ियाँ तो ख़त्म हो गई और ऊपर अर्श है। अब आ गए चौथे खलीफा, कौन? मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन। अब वो कहाँ बैठे? ज़ाहिरी तौर पर दुनिया को तो यही दिखाया ना कि हर एक ने एक दूसरे का एहतराम किया है। रसूलुल्लाह के एहतराम में ऊपर नहीं बैठे, उसके बाद में तीसरे पे बैठ गए, वो आए दूसरे वाले तो वो दूसरे पे बैठे, उसके बाद जो तीसरे आए वो पहले पे बैठ गए। हज़रत अली कहाँ बैठे? ये तो ज़मीन पे बैठे हैं। नहीं, एक मरतबा अब सब के सब जो सियासत मदार थे उस वक्त के, वो दिल में खुश थे कि अब अली बैठेंगे कहाँ। जब नहीं बैठेंगे तो उनकी बात कोई भी काबिल एतबार नहीं होगी, इसलिए कि जो मिंबर से बात होगी वो काबिल एतबार होगी, बग़ैर मिंबर के कोई कबूल नहीं करेगा। एक मरतबा मौला आए और सब देख रहे हैं, आपने पहले जीने को देखा, कहा ये बैठने के काबिल नहीं मेरे, कदम रखा। उसके बाद दूसरी सीढ़ी को देखा, कहा ये भी मेरे बैठने के काबिल नहीं है, उसके बाद उस पर कदम रखा। फिर तीसरी को देखा, कहा ये भी मेरे बैठने के काबिल नहीं है, उस पर भी कदम रखा। उसके बाद आपने फरमाया मैं और रसूलुल्लाह एक नूर के 2 टुकड़े हैं, मुझे और नबी को एक नूर से पैदा किया है और ये मिंबर रसूलुल्लाह ने बनवाया और एक मिंबर मेरे लिए बनवाया जहां अरशे के ऊपर हम दोनों एक साथ बैठे हैं। तुम उम्मतियों ने देखा है,
तो मैं वहां बैठूंगा जहां मेरे बैठने की जगह है। न पहली सीढ़ी मेरे लिए है, न दूसरी सीढ़ी मेरे लिए है, न तीसरी सीढ़ी मेरे लिए है। मेरे लिए वो अर्शा है जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद। और जब अरशे पर इमाम अली बैठे हैं तो तारीख ने बयान किया कि लोगों की आंखें खीरा हो गईं और उनको मैदान गदीर याद आ गया कि कल रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में अपने साथ उस जगह बिठाया था। वो मंजर मौला ने बयान नहीं किया मगर अमली तौर के ऊपर उनको दिखा दिया। कल तुमने गदीर में मुझे जहां बैठे हुए देखा था, अब 25 साल के बाद उसी अरशे के ऊपर बैठ करके मैं दिखा रहा हूं। अब पहचानो 25 साल में कोई फ़र्क आया मेरी ज़िंदगी में? रसूलुल्लाह के बाद जाने के बाद जो मैं कल था वो आज हूं और जो आज हूं वो कल रहूंगा। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल जिस आयत मुबारका को सूरह शूरा की आयत है, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कुल, ये अल्लाह का फरमान है, अम्र है, हुक्म है। मेरे नबी इन लोगों से कहो ला असअलकुम, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता सिवाय इसके, अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो। ये तर्जुमा हमारा है। उर्दू में जिससे भी पूछिएगा वो लफ्ज़ मोहब्बत कहेगा, जबकि मोहब्बत खुद अरबी लफ्ज़ है। मोहब्बत जो है खुद अरबी है। तो अगर अल्लाह का मकसूद, यहाँ पर एक रिवायत नकल कर दूँ, एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का ज़माना है। एक शख्स ने नक़ाइस कुरान, तनाक़ुस कुरान यानी कुरान में क्या क्या कमियाँ हैं वो लिखना शुरू कर दिया और 20 साल तक लिखता रहा। किताब तैयार हो गई और चूँकि उस वक्त का सबसे बड़ा वो आलिम था और लोगों को ये ख़बर हो गई कि इन्हीं ने, इतने बड़े आलिम ने कुरान में कमी निकाली है और कुरान के ऊपर तनक़ीस लिख रहे हैं। तो अब ये ख़बर और ये कि भाई अब वो तैयार हो गया, अब उसको वो सेटिंग कर रहे हैं। जितना उन्होंने जमा किया मुसलमानों में एक परेशानी पैदा हो गई, अगर ये किताब प्रिंट हो करके बाज़ार में आ गई तो क्या हाल होगा, कुरान ही ख़त्म हो जाएगा, इस्लाम ही के ऊपर जो है हर उठने लगेगा। ये ख़बर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक पहुँची। मौला फला शख्स ने एक काम अंजाम दिया है। अच्छा, क्या होना चाहिए? मौला आप बेहतर समझते हैं, मुहाफिज़ कुरान है, आप फरमाएं। जो शख्स आया था नौजवान, आपने फरमाया कि तुम एक काम करो, अगर तुमको कहूँ तो हुक्म मानोगे? मौला बिल्कुल मानूंगा। जाओ उस शख्स के शागिर्द बन जाओ, उसकी शागिर्दी में चले जाओ और रोज़ाना की मुझे ख़बरें दो और उसके जितना करीब हो सकते हो करीब जाओ। अभी तक किसी ने वो किताब देखी नहीं थी। इमाम फरमाते हैं तुम इतना करीब हो जाओ कि वो किताब देखने का मौका मिल जाए। लिहाजा वो उनके करीब होता गया यहाँ तक कि उनकी तबीयत ख़राब हुई, घर पे रहने लगे। तो ये पहुँचा वहाँ पर उनकी आयदत के नाम से और कहा कि हुजूर शागिर्द हूँ, चाहता हूँ दर्स ना छूटे, पढ़ूँ। अब वो औराक बिखरे हुए हैं एक टेबल के ऊपर और उसने वो देखा तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो? उनका कि हुजूर ये औराक आपके बिखरे पड़े हैं, इनको मैं सही करके फ़ाइल बना के रख रहा हूँ। उनका बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, मैं इसी की वजह से बीमार हो गया हूँ कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। तो उसने पूछा हुजूर ये है क्या? उनका ये मेरी 20 साल की मेहनत है। वाह, उसने तारीफ़ की। उसने कहा कि हुजूर ये क्या करना? उनका कि तैयार हो गई है, इसको मैं सेटिंग करके पूरी किताब की शक्ल बना के इसको प्रिंट होने के दूँगा, ज़रा एक नज़र और हुजूर इसका नाम क्या रखा आपने? तनाक़ुस कुरान। बहुत अच्छा नाम रखा हुजूर आपने। तो मकसद क्या है आपका? उन्होंने कहा कि कुरान में जो कमी है मैं उसको ज़ाहिर कर रहा हूँ, कुरान में जो कमी है उसको मैं ज़ाहिर कर रहा हूँ। वो मैंने किताब लिखी है, बड़ी ज़ख़ीम किताब, हज़ारों सफ़ात के ऊपर। ये रोज़ाना की बुनियाद पे इमाम को ख़बर दे रहा था, मौला आज इतना काम हो गया, आज इतना हो गया, आज किताब तक रसाई हो गई, अब ये हो गया, हो गया। अब एक रोज़ कहा कि मौला अब मेरे ऊपर पूरा यकीन हो गया उसको और किताब पढ़ने का पूरा मौका मिलता है और अब वो सब काम उस किताब का मुझसे करा रहे हैं। एक काम करो, आज उनसे तुम एक सवाल करना, पहले उस किताब का मुतालिया करना मुख्तलिफ़ जगहों से, फिर सवाल करना कि जो आपने इतनी मेहनत 20 साल की है, ये कलाम किसका है जिसमें आपने तनाक़ुस निकाला है?
जिसमें नक्श निकालें कलाम किसका है, तो वो कहेंगे अल्लाह का कलाम है। तो उनसे ये पूछना कि आपका इल्म ज़्यादा है या अल्लाह का इल्म ज़्यादा है? जिसने किताब को नाजिल किया है उसका इल्म ज़्यादा है या तुम्हारा इल्म ज़्यादा है? जब वो यकीनी तौर के ऊपर आलिम है, वो ये नहीं कहेगा कि अल्लाह के इल्म से ज़्यादा उसका इल्म है, वो कहेगा मेरा इल्म जो है वो कम है, अल्लाह का इल्म ज़्यादा है। तो फिर दूसरा सवाल ये करना कि जब अल्लाह का इल्म ज़्यादा है, अल्लाह ने किताब को नाजिल किया है, और अल्लाह की मर्ज़ी क्या है, वो क्या चाहता है जो उसने किताब नाजिल की है, उस अल्फाज के मायने में अल्लाह की नज़र में उसके मायने क्या हैं? क्या जो अल्लाह की मुराद है वो आपने पा ली है? आपने वो मुराद ली है जिसकी वजह से तनाकुस पैदा हुआ, तो वो ठिठकेगा और उसी के ऊपर बात तुम्हारी बनेगी। वो गया, किताब देखी, इमाम की हिदायत के मुताबिक मुतले, उन्होंने कहा कि हुजूर ये तो फरमाए ये किताब किसकी है? कहा अल्लाह की है। कहा कि आपने जो इतनी तनाक़ुस निकाले हैं तो ये अल्लाह के इल्म से बुलंद है? लेकिन किताब जब अल्लाह की है, उसने नाजिल की है, तो हर आयत उसने क्यों नाजिल की, मुराद क्या है, मकसद क्या है, वो मफहूम ज़्यादा जानता है या आप? आपने मफहूम अपने लिहाज से समझ के तनाकुस निकाला है, और जिसकी किताब है उसने अपने लिहाज से, तो उसने इसका मौलिम भी अपना कोई बना के भेजा होगा। ये इसने सवाल कर दिया, बड़ा चौंका, कहा तुम शागिर्द मेरे हो और सवाल तुम कर रहे हो। ये सवाल मेरे जहन में जब मैंने 20 साल पहले लिखना शुरू किया क्यों नहीं आया, आज तक नहीं आया। ये सवाल तेरा नहीं है, सच बता ये सवाल किसका है? अब वो तो मजबूर हो गया, उसने कहा कि पहले तो कहता रहा मेरा सवाल, नहीं, ये सवाल जो है ये इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का। एक मरतबा चौंका, ज़ाहिर है हुजूर की नबूवत पे ईमान था। उसने कहा बेशक इसके अलावा कोई एतराज़ नहीं करता। आज तक 20 साल में जिससे मेरी बहस हुई किसी ने एतराज़ किया वो सादिक़ आले मोहम्मद है, उनके अलावा ये एतराज़ कोई दूसरा नहीं कर सकता। किताब को उसी वक्त आग लगा दी या दरियाबूद कर दी, किताब को प्रिंट नहीं किया। कहा कि बिल्कुल सही है, अल्लाह की मुराद क्या है? तो जब अल्लाह की मुराद क्या है, तो जब परवरदिगार आलम जानता है अरबी में कुरान को नाजिल कर रहा है, तो मोहब्बत अगर मुराद थी और मोहब्बत खुद अरबी का लफ्ज़ है, तो अल्लाह ने मोहब्बत का लफ्ज़ क्यों नहीं रखा? हमारी मजबूरी है कि उर्दू में इसका तर्जुमा मोहब्बत के अलावा कोई दूसरा नहीं है। मोहब्बत जो है कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है, वक्ती भी होती है, मोहब्बत आती भी है और जाती भी है। मवद्दत वो है, न आती है न जाती है न कम होती है। जो एक मरतबा मवद्दत पैदा हो जाए, मौत आएगी, मवद्दत ख़त्म नहीं होगी। अब यहाँ अजर रिसालत में मवद्दत मुकर्रर की है, इंशाअल्लाह दूसरी मजलिस में इसकी तफसीलत करूँगा। मवद्दत मुख्तसरन ये समझ ले कि जिससे आपने मोहब्बत की है, जिसको आप अपना महबूब बनाए हैं, उसके रंग में अपने को आप ढाल लें। अहले बैत से मोहब्बत का है ना। अच्छा, अब यहाँ पर जो टेक्निकल चीज़ है वो ये है, मेरे कराबत, कुर्बा का लफ्ज़ है। हम तो आप एक दूसरे के कराबतदार हैं ना। हमारी आपकी कराबत क्या है? कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक रिश्ता है। सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे मौत के साथ, मगर जो रिश्ता हमारे आपके दरमियान है, मौत भी उस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकती है, और वो रिश्ता है विलायत का। हम एक दूसरे के विलायती भाई हैं। मौला अमीरुल मोमिनीन और अहले बैत की विलायत का कलमा हम सब ने पढ़ा है, तो हम सब के अभी ईद गदीर के अमाल में आपने सीगा पढ़ा होगा ना, एक दूसरे को भाई बनाया होगा। ये रिश्ता जन्नत में जाने तक कायम रहेगा, ये ख़त्म नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? एक मरतबा सलावत पढ़े आले मोहम्मद वाली। लिहाजा अब परवरदिगार आलम कहता है कि कुल मेरे नबी आप इनसे कहें, ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सूरह हुजरात की जब तिलावत करेंगे 8 अंबिया का तज़किरा है एक साथ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हर एक ने यही कहा कि हमें कोई अजर नहीं चाहिए, हमें कोई अजर नहीं। हमारा अजर कौन देगा? अल्लाह देगा। इसलिए कि अल्लाह ने नबी बनाया, अल्लाह ने पैगम्बर बनाया, अल्लाह ने रसूल बनाया, वही हमारा अजर देगा।
1,23,999 अंबिया ने अजर नहीं मांगा उम्मतों से, आखिरी नबी ने अजर मांगा है। कोई तो रीजन होगा। जब 1,23,999 अंबिया ने अजर नहीं मांगा और आखिरी नबी अजर मांग रहा है, तो कोई तो वजह होगी। और अजर भी क्या है? अहले बैत से मोहब्बत, मवद्दत। और वो कौन है? वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद मुअन्नस का सीगा है, कुर्बा। सारे कराबतदार ने, सिर्फ अकेली तन्हा एक औरत। अजर रिसालत क्या है? वो अजर रिसालत क्या है? मवद्दत है। किसकी? कुर्बा की। जो वाहिद मुअन्नस, अकेली तन्हा औरत। यानी कुरान भी ये बताना चाहता है कि रसूलुल्लाह के यहाँ सिर्फ एक बेटी थी, कोई और दूसरी नहीं है। जनाब अरबी हजरात से पूछिए कि यहाँ पर कुर्बा से मुराद कौन है? कुर्बा कौन है? का अकेली तन्हा औरत। हदीस किस्सा में इसीलिए जब तारुफ आया तो ना नबी के ज़रिए तारुफ है, ना अली के ज़रिए तारुफ है, ना हसनैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए। जब जिब्रील पूछते हैं परवरदिगारा इस किस्सा के अंदर कौन है जो तू इतनी मदह सराई कर रहा है? इन्नी मा खलक़्तु समा मबनिया वला अर्दम मदिया वला कमर मुनिया वला शम्स मुदिया वला फलक यदूर वला बहर यजरी वला फुल्कन तसरी इल्ला फ़ी महब्बत हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम ताहतल किताब। जब खमसा हैं तो सबसे बेहतर मेयार जो था वो जो नबी सबसे करीब है उसके ज़रिए कहा कि नहीं, हम फातिमतो व अबूहा व बालोहा व बनूहा। ये परवरदिगार आलम कुर्बा की तफसीर कर रहा है। रसूलुल्लाह के कुर्बा का अजर अदा करना है तो वो कौन है? कहा वो फातिमा है, उनके बाबा हैं, उनके शौहर हैं, उनके बच्चे हैं। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। और इससे बेहतर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अब दो चीज़ें थी, एक तो कुरान ने बता दिया कि वो कौन है कुर्बा, तो कुर्बा की तफसील बता दी। दूसरे ये कि अब अहले बैत का लफ्ज़ आता है, अहले बैत से मवद्दत, जो कराबतदार हैं। अब कुर्बा की तो आ गया, कुर्बा में कौन है? फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। अब उसके बाद उनके बाबा हैं, उनके शौहर हैं और उनके बच्चे हैं। नाम नहीं बताया, ये उम्मत के हवाले कर दिया। तुम तलाश करो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बाबा कौन है, उनके शौहर कौन है, उनके बच्चे कौन है। ये उम्मत का काम है कि वो तलाश करे कौन कौन रिश्तेदार हैं। अब एक लफ्ज़ आ गया अहले बैत। आयत तथीर सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। यही है ना हदीस किस्सा का असल जो मलजा व मावा है, वो आयत तथीर है। अहले बैत हैं, तो अब अहले बैत में कौन है? जब पढ़ेंगे आप कुरान तो हर एक आदमी अपने लिहाज से अहले बैत की तशरीह करेगा। अज़वाज भी शामिल हैं और फिर उन अज़वाज के ज़रिए जितनी निस्बतें हैं, जितने रिश्तेदार हैं। शरई तौर के ऊपर एक लड़का है किसी और ख़ानदान का, लड़की है किसी दूसरे ख़ानदान की, इनके दरमियान एक रिश्ता निकाह हो गया तो एक निस्बत हो गई। अब रिश्ता हो गया, निस्बत हो गई, निकाह हो गया, अब ये एक दूसरे के रिश्तेदार हो गए, हस्बैंड और वाइफ हो गए। इसके बाद इनकी नस्ल चलेगी। ठीक। अब चूंकि एक निस्बत है निकाह की, अगर तलाक हो जाए या शौहर मर जाए, निस्बत ख़त्म हो गई। इद्दत के बाद बीवी आज़ाद हो गई, शरीयत ने हक़ दे दिया उसको कि वो दूसरा करना चाहती है कर ले, या मियाँ ने तलाक दे दी तब उसको हक़ मिल गया, इद्दत के बाद वो दूसरी शादी कर सकती है। निस्बत ख़त्म हो गई ना। तो जो सबब बने, अगर वो निस्बत बाकी है, ऐसे ही हम उम्मती हैं। जब तक कलमा पढ़ते रहेंगे हम उम्मती कहलाएंगे। जिस दिन कलमा पढ़ना छोड़ दें अमदन के अब हमें कलमे की ज़रूरत नहीं है, हमें दीन की ज़रूरत नहीं है, हम इस्लाम को छोड़ रहे हैं, निस्बत ख़त्म हो गई, उम्मत हम उम्मती नहीं रहे। है ये नहीं है। मगर जो सुल्ब और रहम से पैदा हो वो रिश्ता ख़त्म नहीं होता। इसीलिए माँ बाप का रिश्ता मौत मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होता, वो बाकी रहता है। ये रिश्ते अहले बैत के हुए हैं। तो अब अहले बैत कौन कौन हैं? इसलिए परवरदिगार आलम ने मैदान मुबाहला को सजा दिया ताकि पहचान हो जाए कि अहले बैत कौन है।
फ़कुल तालो न दो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। यही है ना कि मेरे नबी आप अपने बच्चों को लाएं, इनसे कहें, और वो अपने बच्चों को लाएं, आप अपनी औरतों को लाएं, वो अपनी औरतों को लाएं, वो आप अपने मर्दों को लाएं, अपने मर्दों को लाएं। अब चूँकि हम मुसलमान हैं, इस्लाम का एक रिश्ता है, सारे इस्लामी भाई हैं, जितने चाहे आ जाएं। हर जगह जमा का सीगा है। अबनाना जमा का कायदा यह है, वाहिद एक, इस्नैन दो, और जब जमा आ जाए कम से कम तीन, कम से कम तीन, और ज़्यादा पे कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा, वो जवाब दे देगा। जितने भी हो, मिलियन बिलियन, वो सब के सब जमा में आते हैं। सीगा जमा का आया, अबनाना अपने बच्चे, निसाना हमारी औरतें, अनफुसना हमारे नफ्स। जितने बच्चे आ सकते हैं वो आएं, जितनी औरतें आ सकती हैं वो आएं, जितने मर्द आ सकते हैं वो आएं। मेरा ईमान और यकीन है मदीने में सब सच्चे थे, हम किसी को झूठा नहीं मानते, मगर एक चीज़ है, वो ये सच्चे कब हैं? इस्लाम का कलमा पढ़ने के बाद। बात है ना, इनमें पैदाइशी मुसलमान कोई नहीं है। इस्लाम से पहले की जिंदगी झूठ भी है, शराब भी, हर चीज़ है। इस्लाम के बाद आप कहेंगे ये सब सच्चे हैं। जितनी अक़्द में रसूलुल्लाह के आई हैं उनमें भी कोई पैदाइशी मुसलमान नहीं था सिवाय जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा के। जी, अब मसला यह है कि सच्चे चाहिए, और काम क्या है? लानत भेजना झूठों पर, और वो ऐसा हो कि जिसने कभी झूठ ना बोला हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख यह है कि इस्लाम बाद में आपने पहुंचाया, अपनी अमानत और सिदाकत का कलमा मुशरिकीन मक्का से पहले पढ़वाया। हर मुशरिक मक्का जो है वो आपकी सिदाकत को अमन का कलमा पढ़ता था। अब ये पैगाम सबको पहुंचा, नसराय नजरान को भी पहुंचा, उनको भी पता चला कि सादिक हैं, अमीन है। तो अब जो इनके साथ जाएगा बच्चों की शक्ल में, वो ऐसा सच्चा हो जैसे नबी। जो औरतें जाएंगी वो ऐसी सच्ची हो जैसे नबी। जो नफ्स की जगह जाएगा वो ऐसा सच्चा हो जैसे नबी। अब मदीने वाले आ जाएं, जब ढूंढा तो सिवाय हसनैन अलैहिस्सलाम के कोई तीसरा नहीं मिला, इसलिए दो बच्चे गए, क्योंकि जुज़ थे रसूलुल्लाह के। औरतों में कोई नहीं मिला। जमा का सीगा होने के बाद रसूल जैसी अमीन और सिद्दीक़ा सिर्फ जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी। मर्दों में, नफ्सों में इमाम अली के अलावा ऐसा सिद्दीक़ अकबर कोई दूसरा नहीं था जैसे अली। तो फैसला कर दिया कि अगर रसूल जैसे बच्चे अमीन और सादिक हों, हसनैन, बीबियों में सिर्फ जनाब फातिमा, पूरे लाखों के मजमे में मदीने में जनाब फातिमा तन्हा, और मर्दों में सिर्फ मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। कुरान ने ऐलान कर दिया सिर्फ अहले बैत ये है, इनके अलावा कोई छठा जो है वो अहले बैत में नहीं है। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। और अब इसीलिए एक शरई मसला है जो सही बुखारी ने बयान किया, जो आया सलावात है, इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये सलावात आमतौर पे तो पढ़ते ही हैं, अजर मिलता है, मगर वाजिब है नमाज में। सही बुखारी की हदीस है कि जिसने सलावात नहीं पढ़ी, लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, ए नबी आप पर और आपकी आल पर जिसने सलावात नहीं पढ़ी उसने नमाज ही नहीं पढ़ी। जब आप नमाज के अहकामात पढ़ेंगे, किसी भी मौलाना से पूछ लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आपको किताबों में ये मिलेगा कि अगर किसी वजह से शक हो जाए, गलती हो जाए, रकतों में इजाफा हो जाए, रुकू और सजदे में इजाफा हो जाए, तो उसमें दो पार्ट हैं नमाजों के। एक है अरकान, रुकन जिसको कहते हैं, पिलर, जिसके ऊपर बिल्डिंग की छत ठहरती उसको कहते हैं पिलर, वो सिर्फ 5 है। वो ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, नमाज बातिल। बकिया जो वाजिबात हैं वो 12 हैं, उनमें जो है कमी ज़्यादती सब हो जाए तो नमाज रिपेयर हो जाएगी।
नमाज हकीर नहीं है आपकी, रिपेयर होगी जैसे कपड़े पे पैबंद लग जाए, इसका रिपेयर या तो 1 रकत नमाज खड़े होकर के, 2 रकत बैठ करके, या सजदे सहव के जरिए आप कर लेंगे। मगर ऐसा नहीं नमाज बेकार हो गई। लेकिन एक पार्ट वो है जो सलावात अगर नहीं पढ़ी तो सही बुखारी की रिवायत है, लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी, नमाज खत्म, तुम्हारी दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी। और जब किसी ने पूछा कि मौलाना, इसी मिंबर से अब से कम 20 साल पहले मैंने बतलाया था कि किसी बच्ची ने कनाडा से जो है वो मुफ्ती आजम जो पहले वाले थे सऊदी अरब के, एक आंख के काने या अंधे थे, उनसे सवाल किया था 5 सलावातें या 6 सलावातें उनके यहाँ पाई जाती हैं, कहा इसमें वो सलावात कौन सी, उन्होंने 5 लिखी, उन्होंने 6 लिख के भेजी, कहा ये सलावात जो है वो वाजिब है नमाज के लिए, और वो क्या है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। आप समझे कि नहीं, मैंने आपको डिटेल बता दी कि ये आले मोहम्मद, ये सलावात अलग है उन 5 से। वो जो 5 है, किसी में असहाब का इजाफा है, किसी में शुहदा का है, किसी में सिद्दीकीन का है, किसी में अज़वाज मुताहरात का है, किसी में असहाब का है। ये अकेली सलावात वो है जिसमें सिर्फ पंजतने 5 जनाब रसूल खुदा, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम अली अलैहिस्सलाम और हसनैन अलैहिस्सलाम, छठा कोई नहीं है इसके अंदर। ख्याल फरमाया आपने, ये सलावात नमाज में वाजिब है। तो जब नमाज में किसी दूसरे को अख्तियार नहीं है और सलावात भेजना, वरना नमाज आपने पढ़ी नहीं सही बुखारी के मुताबिक, तो आप सोचिए ज़िंदगी में कौन सा अमल आपका ऐसा है जो इन पंजतने पाक से खाली हो। सलावात पढ़े वाले मोहम्मद वाले। इसीलिए इनकी मोहब्बत को फ़र्ज किया, इस्लाम का कोई रुकन अदा करो, अजर रिसालत अदा करना होगा। और अजर रिसालत को इतना आसान बना दिया अल्लाह ने। आप एक चीज़ बताएं, अगर माली शक्ल में अल्लाह ने टैक्स लगाया होता हर काम का इस्लाम में, कितने देते? आज बताएं कि खुम्स कितने देते हैं, ज़कात कितने देते हैं? मुसलमान पक्के हैं, होता ही नहीं होता। और ख़ासतौर से हमारे मौलाई जो हैं, जब बाग़ फ़िदक का तज़करा आता है, आप देखिए कितने ज़मीन से उछल उछल के लानत करते हैं, नहीं करते गासिबान के ऊपर। और अगर उनको बताया जाए ये खुम्स भी जनाब फ़ातिमा का हक़ है, तो गर्दन झुक जाती है। होता ही नहीं होता, तजर्बात है। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल ज़िम्नन एक चीज़ आ गई थी, अर्ज़ कर दी आपकी खिदमत में। जो भी अजर होगा वो किसके लिए? जनाब फ़ातिमा ज़हरा के लिए। अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया, मेरे नबी वो अजर मुकर्रर करें कि इधर मोमिन इरादा करे और उधर उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। इसलिए कम से कम जो अजर रखा है वो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर सलावात रखा कि इधर आपने दुनिया में कहीं रहते हुए आपने अपनी ज़बान पे जारी किया और उधर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, और नेकियां आपके 1000 गुना जो है वो बुलंद होती चली गई। क्यों? ये अमल वो है कि जो अल्लाह पहले करता है, उसके बाद मलाइका करते हैं, उसके बाद मोमिनीन के लिए हुक्म है कि तुम भी सलावात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। और बस 2 छोटी छोटी रिवायतें और यही से रब्ते मसाइब ख़त्म किया आपकी ज़हमतों को। वक्त भी तमाम होने जा रहा है। ज़ाहिर है कि आपने इंग्लिश की मजलिस सुनी, उसके बाद नमाज, और उसके बाद ये बहुत ही मुख्तसर मेरा वक्त महदूद रहे ताकि आपको ज़हमत ना हो। हुजूर, मैंने अभी मिंबर का बयान किया कि जो चीज़ मिंबर से बयान होगी वो मुसलमानों का लायक एतबार है, चलिए उसी को ले लीजिए आप। हुजूर मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं, लाखों का मजमा है, मस्जिद नबवी छलक रही है मुसलमानों से। हुजूर, अब सबका रुख है हुजूर की तरफ, हुजूर का रुख है लोगों की तरफ। सामने दरवाज़ा है मस्जिद का, वहाँ से एक बच्चा एंटर हुआ, छोटा सा बच्चा एंटर हुआ, दामन में उलझा गिर गया। मैं मिंबर में बैठा हूँ। हमारे यहाँ मजालिस का एक अदब और एहतराम है, मिंबर का एक अदब और एहतराम है या नहीं है? मेरा बच्चा अगर दरवाजे पे आए छोटा और गिर जाए, मुझे ज़ेब देगा कि मिंबर पर से उतरूं और जाके बच्चे को उठाऊं और फिर मिंबर पे आके बैठ जाऊं। जो मेरे ख़ास दोस्त अहबाब हैं वो भी मेरे ऊपर लानत भेजेंगे, और सेकंडों में जो है इंटरनेट के ऊपर नशर हो जाएगा। आगे के लिए भी रास्ता बंद। मजलिस पढ़ने का ये मौलवी काबिल एतबार नहीं है, इसको तो बच्चों की मोहब्बत खाई जाती है, मिंबर छोड़ के भाग जाता है या नहीं है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानिए दीन,
बानिए शरीयत, ये पूरी कायनात उसकी मोहब्बत में अल्लाह ने खल्क की। बच्चा दरवाजे पर गिरा, किसी भी साहबी से कहते उठा लेता, नहीं, मुनक़ता किया खुतबे को, उतरे गए, बच्चे को उठाया, गोद में लिया, प्यार किया। अब तक जो मिंबर पे रसूल को देख रहे थे, अब देख रहे हैं कि किसी बच्चे को प्यार कर रहे हैं। मिंबर पे आए और बैठने के बाद अब आपने गुफ्तगू फिर शुरू की, हाजा हुसैनुन फारिफू। तो अब दो ही बातें हैं, अगर आप ये देखिए कि अक्सर व बेशतर शायरी में हो जाता है, बेरब शहर आ जाते हैं, लोगों का मिजाज ख़राब हो जाता है, हुटिंग शुरू हो जाती है। अगर ऐसी जाकिर जो है वो इधर से उधर की बोलने लगे और एक मौजू पे ना बोले, एक बात कहीं से ली एक कहीं से ली, तो हर एक कहेगा ठीक है, एहतराम है, मजलिस से सुन लिया, मगर साहब कोई पता नहीं इनके जहन का कब किधर निकल जाए, होता है नहीं होता है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, लफ्ज़ खुतबा है, आपकी ज़बान से निकला हुआ खुतबा है, काबिल एहतराम है। मगर अब दो बातें हैं, या तो यह है कि अब तक जो गुफ्तगू हो रही थी वो इसी बच्चे से मुताल्लिक़ थी जो बेरब्त नहीं हुई, गोद में आए फौरन लफ्ज़ क्या, हाजा हुसैनुन। हाजा का क्या है, इशारा, ये गोया ये लफ्ज़ बता रहा है कि अभी जो मैं तज़किरा कर रहा था, जिसकी मदह सराई कर रहा था, जिसका जिक्र कर रहा था, जिसका जिक्र तुम सुन रहे थे, यही वो हुसैन है। फ़हाजा हाजा हुसैनुन फ़ारिफ़ू, इसको पहचानो, इसकी मारिफत हासिल करो, यही कल का मुहाफ़िज़ दीन है। कल नमाज़ें इसी के वजूद से रहेंगी, कल इसकी कुर्बानियों का समरा तुम्हारे दीन मौजूद होगा, तुम्हारा कुरान मौजूद होगा, खाना काबा की अजमत अगर बाकी होगी तो यह है जिसको पहचानो। मिंबर से बयान कर रहे हैं, उसके बाद नमाज पढ़ा रहे हैं। मुझे किसी किताब में नहीं मिला नमाज जमात थी, मगर ये सब मानते हैं कि नमाज में रसूल है सजदे में, और बच्चा, यही बच्चा आके पुष्प पे सवार हो गया, पुष्प पे सवार हो गया बच्चा, ठीक है। मगर जो रिवायातों से नतीजा निकला है वो यह है कि नमाज जमात थी, नमाज जमात थी। बच्चा आया, पुष्प आके बैठ गया। एक मर्तबा ज़िक्र रुकू और ज़िक्र सजदा एक बार वाजिब है। ज़िक्र रुकू सुबहान रब्बिल आला व बिहम्दे, सुबहान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे, और सजदे का जिक्र जो है सुबहान रब्बिल आला व बिहम्दे, एक मर्तबा वाजिब है। 3 मर्तबा मुसाहब है, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, या पूरा जुमला कहें, 3 मर्तबा मुसाहब, वाजिब भी अदा हो गया, मुसाहब भी अदा हो गया, ठीक। बच्चा बैठा है पुष्प के ऊपर, सब नमाज में, अक्सरियत वो है जो बूढ़े हैं। आप देखें ना, जरा सा हमारी कमर में दर्द हो जाए, हम चेयर पे आके बैठ जाएंगे, अपनी सी जगह भी हाथ में ले लेंगे। होता है या नहीं होता? आपने अभी देखा होगा नमाज में, हर रोज देखते होंगे। कितने बूढ़े थे मस्जिद के अंदर, क्या हुजूर को यह ख्याल नहीं आया? आया, बच्चे को उतारना चाहा। मशहूर अहले सुन्नत के आलिम, एक लखनऊ में महला है फरंगी महल, वहाँ के आलिम मुफ्ती मुल्ला मुबीन फरहंगी महली, वो लिखते हैं कि हुजूर ने बाजू पकड़ा बच्चे को उतारने के लिए, तेजी के साथ जिब्राइल आए, घुटने पे हाथ रखा, कानों के करीब कहा, हबीबे खुदा, आपके अल्लाह का हुक्म यह है बच्चे को उतारिएगा नहीं। क्यों? जब तक ये बच्चा अपनी मर्जी से न उतरे आपको सजदे में रहना है। अब नबी सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, सारे असहाब जानते थे कि वाजिब भी अदा हो गया, मुस्तहब भी अदा हो गया। अब ये सुबहान अल्लाह काहे की हो रही है? तारीख में आया कैसे कि बच्चा पूछ पे है, उठ उठ के देखा होगा ना बेचारों ने, जब कमर में दर्द हुआ होगा, क्या बात है आज रसूल भूल गए हैं क्या? इसलिए कि तारीख का वाक़या है, पहले साहब नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में रह गए बैठे बैठे, और नमाज नहीं, सर नहीं उठाया, तो लोगों ने चेमेगुइयाँ शुरू, नमाज ख़त्म कर दी। किसी ने दीवाना कहा, किसी ने भुलक्कड़ कहा, मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लग गए। उनका हुआ क्या, बहरहाल वो एक अलग कहानी है, उसमें नहीं जाना। उसी मदीने में, उसी मस्जिद के अंदर, और यहाँ नबी जो है वो सजदे के अंदर है, कोई एक आवाज़ नहीं। अच्छा, बच्चा पुश के ऊपर आ गया है, बच्चा पुश के ऊपर आ गया। सवाल तो करेंगे ना लोग, या रसूलल्लाह क्या बात है? कहा भाई मैं क्या करूं, तुम्हारे बुढ़ापे का ख्याल था, तुम्हारे कमर के दर्द का ख्याल था, मैंने उतारना चाहा, मगर जिब्राइल आए, उन्होंने मजबूर कर दिया कि नहीं, बच्चे को ना उतारिएगा। यानी बता दिया बच्चा पुश से खुद उतरेगा तब मैं उठूंगा,
वरना मैं पाबंद हूं अल्लाह के हुक्म का। बता दिया रसूल ने। किसकी मोहब्बत? हुसैन इब्न अली की। अब ये बताइए, क्या बच्चे की तारीफ कर रहे थे सजदे में, या सुभान अल्लाह कह के अल्लाह की हम्द कर रहे थे, अल्लाह की तारीफ? और उस जिक्र का सबब कौन बना? हुसैन इब्न अली जी, रसूलुल्लाह की ज़बान। अब इस्लाम का हुक्म आ गया, 70 मरतबा इस्तग़फ़ार, 70 मरतबा तस्बीहात। अगर हुक्म है शरीयत का हर फ़िक़ा के अंदर, अगर इस्तग़फ़ार की तादाद, इस्तग़फ़ार की जाए किसी गुनाह से, तो उसकी तादाद कितनी हो? का 70 मरतबा। का क्यों? रसूलुल्लाह को सजदे में हुक्म मिला है 70 मरतबा आपने जो है वो उस वक्त जो है अल्लाह की हम्द की है, अल्लाह का शुक्र किया है, सुभान अल्लाह कहा है, जब तक उनका नवासा पुष्ट पर बैठा रहा। यह हुक्म शरीयत सबब बना हुसैन इब्न अली के आने का। अजब नहीं हुसैन इब्न अली कहे, नाना आज आपने मेरे लिए सजदे को इतना तूल दिया है, तो सही आपके सजदे की अजमत को इतना बुलंद करूंगा कि सजदे में सर जाएगा, सर नहीं उठाऊंगा। बस अज़ादारों ख़त्म किया, इससे ज़हमत अर्ज नहीं करना आपकी खिदमत के अंदर। सिर्फ इमाम हुसैन की मदीने से रवानगी, क्योंकि कल 2 मुहर्रम हो जाएगी, आज पहली है। आज चाहता हूं रवानगी पढ़ दूं और कल आमद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, एक शख्स शाम का जो है मुसाफिर है जो मदीने पहुंच गया। तारीख़ में जो मिलता है वो कहते हैं कि मैंने देखा कि नाके जो हैं वो खड़े हुए हैं और एक बुज़ुर्ग हैं कि जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और एक एक फ़र्द को हुक्म दिया जाता है, एक एक बीबी आती है और उसको जो है वो बिठा दिया जाता है। तो उसके बाद कहते हैं कि मैंने देखा कि जब सारी बीबियाँ सवार हो गई तो ये बुजुर्ग खुद खड़े हुए कुर्सी से, आवाज़ दी, अब्बास इधर आओ, अली अकबर इधर आओ, अब्दुल्ला इधर आओ। सारे बनी हाजिम खड़े हो गए और उसके बाद सबने चादरें तान ली। कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने एक नौजवान जो अब्बास थे उनको देखा, उन्होंने ज़मीन पर घुटना रखा। एक बीबी निकली, उन्होंने घुटने के ऊपर पैर रखा और इमाम वक्त ने एक तरफ से बाजू पकड़ा, एक तरफ से नौजवान अली अकबर ने बाजू पकड़ा, सवार कराया। मैंने हाथ जोड़ के पूछा, भाइयों ये कौन है? कहा ये शहजादी ज़ैनब है, ये जो सवार करा इमाम वक्त है। कहा कि ये घुटना, कहा कि ये अब्बास है, ये बाजू है इमाम का, और जो दूसरा जवान है कहा वो अली अकबर है। तारीख़ में मिलता है कि एक सहाबी थे रसूलुल्लाह के जो कानों से बहरे थे, और इतने बहरे थे कि जो बिजली के कड़कने की आवाज़ है वो भी सुनाई नहीं देती थी। रात को करवटें बदल रहे हैं तो बीवी मिडनाइट में कहती है, क्या बात है आज नींद क्यों नहीं आ रही? कहा बीबी तुम जानती हो कितना बहरा हूँ मैं? हाँ मैं जानती हूँ। कहा कि पता नहीं किसी के रोने की आवाज़ आ रही। बीबी मैं बह रहा हूँ, बिजली की आवाज़ मेरे कानों में नहीं आती, मगर आज किसी के बीबी की आवाज़ आती है। वो बड़ी भी बैठ गई, वो कहती है जानते हो, अरे शहजादी फातिमा की आवाज़ होगी, इसलिए कि सुबह को मदीना वीरान हो रहा है, शहजादी ज़ैनब और हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह। कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अलविदा के लिए सबसे पहले जो है नानी के पास आए। जनाब उम्मे सलमा ज़हीफ़ा हैं। कहा नानी अम्मा मैं जा रहा हूँ। तो कहा कि बेटा सफ़र में जा रहे हो? कहा कि हाँ। कहा बेटा जा रहे हो ज़रूर जाओ, मगर इराक़ न जाना, करबला न जाना। कहा क्यों नानी अम्मा? कहा बेटा ठहर जाओ, एक शीशी लेके आई। बेटा ये तुम्हारे नाना ने मिट्टी दी है और मुझे नसीहत की है, जिस रोज़ ये खून हो जाए उस रोज़ जो है वो हुसैन इब्न अली तुम्हारा फर्जंद शहीद हो जाएगा। मैंने पूछा मिट्टी कहाँ की है? कहा ये करबला की मिट्टी है, मक़तल हुसैन की। एक मरतबा इमाम ने 2 उंगलियाँ की, नानी अम्मा इन उंगलियों के सहारे देखे। जनाब उम्मे सलमा ने देखा, एक मरतबा घबरा के कहती है बेटे कौन सी जगह है? यहाँ तो लाशें बिखरे पड़े हुए हैं। नानी अम्मा ये मेरी कुर्बान गाह है, यहीं के ऊपर की ये मिट्टी है। उसके बाद हाथ बढ़ाया और वहाँ से खाक उठा करके दी। नानी अम्मा इस मिट्टी को भी रख दें और जब ये खून हो जाए तो समझ लीजिएगा वो होगा आखिरी रिवायत ख़त्म दुआ। अब आप अपनी फूफी जनाबे उम्मे हानी के पास आए, बैठ गए। ना फूफी अम्मा मैं जा रहा हूँ सफ़र के ऊपर,
बेटा ये मुमकिन नहीं है कि 2-4 रोज़ के लिए सफ़र को टाल दो। नहीं फूफी अम्मा, क्यों, क्या बात है? कहा कि बेटा बैठ जाओ मेरे पास। बैठ गए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा। कहा क्यों? जब तुम्हारे नाना का इंतकाल हुआ उससे 3 दिन पहले मेरे घर में रोने की आवाज़ आई। मालूम हुआ जिन्नात की औरतें रो रही हैं। बोले उसके बाद जब तुम्हारी मादरे गिरामी की शहादत हुई तब 3 दिन पहले से औरतों के रोने की आवाज़ आई। जब तुम्हारे बाबा शहीद हुए तब 3 दिन तक रोने की आवाज़ आई। बेटा जब तुम्हारा भैया हसन शहीद हुआ तब 3 दिन हो। बेटा 3 दिन हो गए हैं, बीवियों के रोने की आवाज़ आ रही है। मेरा दिल घबरा रहा है। बेटा अगर जा रहे हो खुदा के वास्ते ए बेटा करबला ना जाना। एक मर्तबा इमाम फूफी के सीने से लगे। फूफी अम्मा, जो चीज़ मुकद्दर में लिख दी गई हो उसे कोई नहीं टाल सकता। मैंने नाना से वादा किया है। खुदा हाफिज किया और काफिला रवाना हुआ। मदीना शहर के बाहर आया। एक मर्तबा इश्क के सहारे से एक बच्ची आती है। जनाब फातिमा सुगरा काफिले को ठहराती है। बाबा बहुत खुशामद की कि बाबा बेटी हालात बेहतर होंगे, ज़रूर तुझको बुला लूँगा, घबरा नहीं, तुझे तना नहीं छोड़ूंगा। एक मर्तबा आती हैं जनाब रबाब के पास और जनाब अली असगर को ले लेती हैं। 18 दिन का ये बच्चा है। 28 रजब को सफ़र इमाम के वक्त और बच्चे को लेके सीने से लगा लेती हैं। इमाम काफिले को रोक लेते हैं। बेटी खुदा हाफिज कहती है। बीबियों को हुक्म दिया इमाम ने अली असगर को गोद में ले लो। बीबियाँ आगे बढ़ी। बच्चा जो है वो अपनी बहन के सीने से लिपट गया। एक मर्तबा जब किसी ने गोद में नहीं आया तो इमाम आगे बढ़े और उसके बाद जब आगे बढ़े तो बेबी कहती है, बाबा अगर खुद से असगर आए तो ज़रूर ले लीजिएगा, मगर मेरी गोद से न लीजिएगा, इसके सहारे में ज़िंदा रह जाऊंगी। इमाम फरमाते, अच्छा बेटी इतनी इजाज़त दोगी अली असगर के कान में कुछ कह सकूं? हाँ बाबा ज़रूर कहें। एक मर्तबा कानों के करीब गए। बेटा अली असगर, तुम्हें बहन की आगोश पसंद आ गई? ए बेटा करबला की फहरिस्त के अंदर शोहदा में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। भाई ये सुनना था। इमाम ने हाथ फैलाए। बच्चे ने बहन की आगोश को छोड़ा। इमाम के आगोश में आए। जनाब ज़ैनब देख रही थी। एक मर्तबा हाथ जोड़ के कहा, भैया आपको मेरे हक की कसम, असगर के कानों में आपने क्या कहा? बहन न पूछो भैया, हक की कसम। कहा बहन मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा बेटा अली असगर क्या बहन की आगोश पसंद आ गई? करबला के शोहदा में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, क्या नाना की उम्मत को नहीं बख्शवाओ? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। मातम हुसैन। या हुसैन 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 या हुसैन। महफूज काफिला है, महफूज काफिला है, अब्बासी जो जिंगा है। महफूज काफिला है, अब्बासी जो जिंदा है। महफूज काफिला है, अब्बासी जो जिंदा है। अभी गोरी करबला है, अभी गोरी करबला है, अब्बासी जो जिंदा है। महफूज काफिला है, अब्बासी जो जिंदा है। महफूज काफिला है, अब्बासी जो जिंदा है। इस नूरी कारवा में नूरी हमारी आ गए, नूरी हमारी
पर आलम खुला है, अब्बास जो जिंदा है, महफूज काफिला है, महफूज काफिला है, अब्बास जो जिंदा है। नाम रमो का मजमा हक हक के गए गुजर का, पहरे पे बावफा के हो रहा गरश का, के हो रहा गरश का, क्या शान और गबगा, अब्बास जो जिंदा है। अभी घूर करबला है, अभी घूर करबला है, अब्बास जो जिंदा है, महफूज काफिला है, अब्बास है, महफूज काफिला है। अब्बास जैसा भाई सालार कारवा गए, बोले हुसैन मुझको फिर कोई गम कहाँ गए, फिर कोई गम कहाँ है, गर गम किए गवा गए, अब्बास जो जिंदा है। अभी गूर करबला है, अभी गूर करबला है, अब्बास जो जिंदा है, महफूज काफिला है, महफूज काफिला है, अब्बास जो जिंदा है। ज़ैनब आए की मलिका, कुलसूम और शकीना, लैला रबाब फरवा, कुबरा शकीना फेजा, कुबरा शकीना फेजा, हर बीबी बारगाह है, अब्बास जो जिंदा है, महफूज काफिला है, अब्बास जो जिंदा है, महफूज अब्बास जो जिंदा है। या हुसैन या हुसैन, 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 एक बारी सर में कुबाबेदा, सजाद बिरा मिलवाए, मेरा वादा है वलना रोसा, एक बारी सर में कुबाबेदा, सजाद बिरा मिलवाए, मेरा वादा है वलना रोसा, एक बारी सर में कुबाबेदा, सजाद बिरा मिलवाए, मेरा वादा है वलना रोसा, एक बारी सर में कुबाबेदा, सजाद बिरा मिलवाए, मेरा वादा है वलना रोसा, एक बारी सर में कुबाबेदा, सजाद बिरा मिलवाए, मेरा वादा एक बारी सर में कुबाबेदा, सजाद बिरा मिलवाए, मेरा वादा है वलना रोसा, एक बारी सर में कुबाबेदा, सजाद बिरा मिलवाए, मेरा वादा है वलना रोसा, एक बारी सर में कुबाबेदा, सजाद बिरा मिलवाए, मेरा वादा है
मैं को प्यूं मजलूम दहिक वारी मैं को प्यूं मजलूम दहिक वारी रुखसार जरा चुमवाए मेरा वादा है वलना रोसा एक वारी सर में कुबा बेदा सजाद बिरा मिलवाए मेरा वादा है वलना रोसा एक वारी सर में कुबा बेदा सजाद बिरा मिलवाए मैं को प्यूं मजलूम दहिक वारी मैं को प्यूं मजलूम दहिक वारी रुखसार जरा चुमवाए मेरा वादा है वलना रोसा एक वारी सर में को बाबेदा सजाद बिरा मिलवाए मेरा वादा है वलना रोसा जियो ओ मैं को खा कितनी दर नहीं आंदी जेड़ा समझदी हाँ कण दुखे वैंदे मैं को खा कितनी दर नहीं आंदी जेड़ा समझदी हाँ कण दुखे वैंदे मैं कुछ मर तमाचे मारे मैं कुछ मर तमाचे मारे मेरे रुखसार गवाए मेरा वादा है वलना रोसा एक वारी सर में कुबा बेदा सजाद बिरा मिलवाए मेरा वादा है वलना रोसा एक वारी सर में कुबा बेदा सजाद बिरा मिलवाए मेरा वादा है वलना रोसा एक वारी सर में कुबा बेदा सजाद बिरा मिलवाए मेरा वादा चौसाला दी मासूमा दे नहीं सर दे वाल सफेद होंदे चौसाला दी मासूमा दे नहीं सर दे वाल सफेद होंदे मैं वांग ज़ईफ़ा हो गया मैं वांग ज़ईफ़ा हो गया किया दुख बाबे दा खाए मेरा वादा है वलना रोसा एक वारी सर में को बाबेदा ओ सजाद बिरा मिलवाए जियो जियो मातम जियो सजाद बिरा मिलवाए मेरा वादा है वलना रोसा एक वारी सर में को बाबेदा सजाद बिरा मिलवाए मेरा वादा है वलना रोसा मैं प्यूं दी मातमदार जदा जिंदान शाम च मर वैसा मैं प्यूं दी मातमदार जदा जिंदान शाम च मर वैसा मैं को दफन करे सजाद बिरा मैं को दफन करे सजाद बिरा ए ओ मेला चोला पाए मेरा वादा है वलना रोसा एक वारी सर में को बाबेदा सजाद बिरा मिलवाए मेरा वादा है वलना रोसा एक वारी सर में को बाबेदा सजाद बिरा मिलवाए मेरा वादा है वलना रोसा ओ मैं को प्यूं मजलूम दहिक वारी मैं को प्यूं मजलूम दहिक वारी रुखसार जरा चुमवाए मेरा वादा है वलना रोसा एक वारी सर में को बाबेदा ओ सजाद बिरा मिलवाए मेरा वादा है वलना रोसा एक
अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खातिमुन नबिय्यीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या सय्यिदुल वसीयीन, अस्सलामु अलैका या फातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या खतियतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या हसनुल मुज्तबा सिब्त रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीका व अला उम्मिका व अखीका, अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या अली इब्नुल हुसैन, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद इब्न अली, अस्सलामु अलैका या जाफ़र इब्न मोहम्मद, अस्सलामु अलैका मूसा इब्न जाफ़र, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसा, अस्सलामु अलैका मोहम्मद इब्न अली, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मोहम्मद, अस्सलामु अलैका हसन इब्न अली, अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र व ज़मान अल-अमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या तफ़सीरुल फ़ुरक़ान, अस्सलामु अलैका या इमामिल वल जान, अज्जलल्लाहु ताला फ़रजक व सहला मख़रजक व ज़ुहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।